अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पी चिर्प. आज मेरे साथ हैं मीना तारिक. हाय मीना. Hello. She is an entrepreneur and investor and currently the CEO and founder of Metric app. Yes. She has been in the startup community for Pakistan for a very, very long time, right? And I think she has worked with and helped a lot of people. At one point she was also working with Invest to Innovate, right? Yeah. So she has a lot of experience in that area, which is why she's here, because I think मेरी जो काफ़ी all female audience है and a lot of people who have an entrepreneurial mindset but they lack guidance or just sort of, you know, or they can't find people around them who can just have that conversation with them, right? So I thought maybe I can bring you on that platform and just take some insight from you. But before we begin, I think this will also ties down to our conversation before we started. I always like to explore like your life before any of this happened or any of this started, and I think that's necessary because everybody has a different background, different level of privilege, different woes. So it's important to have that in context before you talk about what you've done or what has happened, right? So it gives more clarity. Absolutely. So which is why we'll just start with that. Where were you born and raised? Where are you from? Let's talk about that first. Sure. मुझे ना वो समीना पीरज़ादा की वो याद आ रही है. She always starts with बचपन कहाँ गुजरा, दरख्त चढ़े कि नहीं चढ़े टाइप की thing. बहुत मजा आता होगा. She goes very deep. गुड़ियों से खेला कि नहीं खेला. मैंने गुड़ियों से खेला था बहुत ज़्यादा और दरख्तों पे भी चढ़े थे और सड़कों पे भी खेला था. And by the way, is this English or bilingual? Like how should I just switch? ठीक है. Whatever you're more comfortable with. ठीक है. I like switching. So I think I'm funnier in Urdu, which is why मैं उर्दू में ज़्यादा फिर जो है ना चीज़ें ऐड कर देती हूँ. Best. I was born in Peshawar actually. My parents are Pakhtun, Pashto speaking. But when I was very young, they moved to Lahore for work. They had this stormy love marriage and were thrown out of their houses and were like, you know, living in like a room in a low-end area of Peshawar, and that's how they started their lives. My father was a doctor. He had just graduated when they got married, and then they were, you know, kind of thrown out of the house and had to start their lives from scratch. तो उन दोनों ने बिल्कुल zero से start किया. My grandfather was very rich, but he did not give us any money all our lives until I guess the very end of his life. But yeah, so I was born over there, and then Eamon, my younger sister, was born right after, and I have two older siblings who are from my mum's previous marriage, but they were not living with us at that time. And we shifted to Lahore because my father got a job in Lahore, and so I think the first 4 years of my life, I think, were spent in Lahore. And my dad was, you know, slowly making his way up. My parents were trying different things. They tried to open a clinic in Peshawar. My father tried to open a burger shop in Hayatabad. Like they were just experimenting and trying to survive and trying to figure out life. And I think very much in love and having fun also. We moved to Lahore. My younger brother was born, and then my father's luck, I guess, kind of changed. He got a job in an American company. So he was a doctor, but because I actually think he didn't even complete his house job. He started working right off the bat in the NGO sector. तो उनको एक development sector organization में job मिल गई और वो इस्लामाबाद move कर गए. और I was 4 years old at that time, so this is 30 years ago. तो तब इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं होता था. हम F10 move किए थे और वो literally यहाँ पे F11 एग्जिस्ट ही नहीं करता था. उससे आगे तो कुछ भी नहीं था और इस साइड पे भी बेयरली कुछ था और F10 मरकज़ भी उस वक्त कम्प्लीटली डिफरेंट होता था. तो दैट्स काइंड ऑफ हाउ वी स्टार्टेड ऑफ. और फिर F10 से वो लोग आए थे, हम साल 1.5 साल एक घर में रहे और फिर हम G10 मूव कर गए. तो आई ग्रू अप इन G10-3. G10-3 is home ground for me. Have you always been in Islamabad since then? Always been in Islamabad. Okay, so you were like the very core, much, the OG Islamabadis. Very much the OG. जो उस टाइम से आए थे और फिर बस यहीं रह गए. And G10-3 was like, you know, G10 Street 55 G10-3 पूरा वो मोहल्ला, आंटियाँ, लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, नेबरहुड के सारे लोग मिलके खेल रहे हैं, आंटियाँ एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर 3-3 दफ़ा चाय पी रही हैं और गपशप लगा रही हैं और हर कोई आपको डांट सकता है और हर कोई आपको घर भेज सकता है और किसी के घर में भी जाके आप खाना खा सकते हैं और रोज़ आप सड़क पे खेल रहे हैं फ्रेंड्स के साथ. तो that was the life we grew up in. But this also meant it was because everybody was there from smaller towns, like smaller cities, different जगहों से लोग आए हुए थे. तो it was like a very mixed culture sort of thing. और हर कोई अपने traditions को भी लाया हुआ था. तो it was quite traditional actually.
मतलब more on the conservative side of things आप कह सकते हैं. Right. तो जो upbringing थी वो काफ़ी उस तरह की थी और मैंने I think अपने सामने देखा acceptance of women driving even or acceptance of women working. Those were not things that were a part of our life or our community at that time. And we saw those things over time develop. But that's where I started. Was your mother ever working? माई मदर एक्चुअली जब हम लाहौर में थे तो मेरे फादर वहाँ जहाँ काम करते थे उनका डे केयर था. सो फॉर अ लिटिल वाइल शी रैन दैट डे केयर सेंटर बट शी इज़ एक्चुअली नेवर वर्कड. She's never worked for money. She's worked a lot. She was constantly working. We did not have any house help. उस वक्त कोई सीन ही नहीं था. तो I mean she was just running the whole house and doing a lot of work. It was just not paid work. Yeah, paid work. She couldn't drive. वो मेरे डैड से छुप के उन्होंने ड्राइविंग सीखी और फिर फाइनली मेरे डैड को कन्विंस किया कि उनको गाड़ी चलाने दें. तो अगेन ये वो टाइम था हम ना जब ये बातें अनइमेजिनेबल थी. ख़वातीन का ड्राइव करना बहुत रेयर था उस टाइम पे. एटलीस्ट जिस कम्युनिटी में हम बड़े हो रहे थे वहाँ पे इवन वुमेन वर्किंग. व्हेन माय ओल्डर सिस्टर स्टार्टेड वर्किंग, forget working, even when she went to university, तो हमारे इर्द के जो लोग थे उसमें जो लोग यूनिवर्सिटीज़ जा भी रहे थे उनकी बड़ी पक्की बात थी कि उन्होंने शादियाँ करनी है. तो the fact that she was planning to work or she started working, people would say things like हमारे घर की लड़कियाँ तो नहीं करती हैं. ऑफिसेज में मतलब ये याद है मुझे ये बातें, ऑफिसेज में काम करने वाली लड़कियाँ जो होती हैं उनको बॉसेस के साथ डेट्स पे जाना पड़ता है. इस किस्म की बातें होती थी. तो ये हमने अपने सामने चेंजेस देखी हैं एक्चुअली. मतलब इन माई लाइफ टाइम we have seen this progression, this thought process change, this acceptance. I drive now, I drive constantly and it's not even a thing. Like it's not a thing. But us time pe, and actually I drive even when my husband is in the car. He I enjoy driving, so he sits in the passenger seat and this was something that हम जब छोटे थे तो ये बातें होती थी, तुम बड़े होके ड्राइव करोगी, तुम बड़े होके जॉब करोगी, तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज. स्कूल की बच्चियां आपस में ये बातें डिस्कस करती थी और जो ये कहता था कि मैं करूंगी वो बड़ा अच्छा वाओ लाइक मतलब रिस्की यू नो लाइक रिबेलियस. अच्छा ओके ऐसी फीलिंग भी ऐसी होती थी. आई एम सच अ रेबेल यू नो मैं कह रही हूँ मैं बड़े होके ड्राइव करूंगी. That's the, I don't know if I've gone into too much detail, but like that's the context of where I grew up. Yeah, no, that's what I wanted. You know, so you can paint a picture for others to imagine what your life looked like. Yeah, my dad didn't even let me do an internship. मैं उस दिन किसी को बता रही थी actually ऑफिस में हमारे interns कल आए थे तो कल हम यही डिस्कस कर रहे थे. I've never done any internship. क्योंकि करने नहीं दी. हाँ, because every time I would try, my dad was just like इधर उधर कर देते थे बात को. तो मैंने कभी नहीं की. मेरी जो छोटी बहन है उसने कर ली, but I never got to do it because he would जो बात को इधर उधर कर देते थे. Are you सबसे बड़ी? I am not सबसे बड़ी because I have those two other siblings. तो वो दोनों बड़े हैं, but from my father I am the oldest. Okay, अच्छा मतलब that's what I meant. हाँ, so there's a gap. So my older sister is 9 years older than I am, and then my older brother is 13-14 years older than I am. So I think in a lot of ways my older sister opened up. मैं उनको कहती हूँ you know you should give yourself credit because the things she did set that. She carved the उन्होंने वो रास्ते खोले और फिर उसके बाद things became normalized. ये होता है ना कि वो शुरू वाले जो पहले चीज़ें करते हैं, not just in siblings, किसी भी situation में they run so they walk so that you can run. Torch bearers होते हैं ना. So my sister went on the Fulbright actually. And she was मतलब उस वक्त तक तो हमारे neighborhood में कभी कोई ऐसी कोई लड़की अकेले जाए और आंटियों ने खूब बातें की और खूब वो हुई और मेरी अम्मी भी मतलब you know परेशान भी हुई. She never stopped my sister, but ज़ाहिर है परेशानी और वो और ये कि चली जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी और शादी भी नहीं करेगी और ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा और मतलब वो सारी जो dealing with all this noise. So much. And then all of that also came on to me, right? When my sister left, it was like, मीना की शादी करा दो वरना ये भी हाथ से निकल जाएगी. इसकी वो बड़ी ने तो नहीं की, वो तो निकल गई है और you know देखो उसका कितना मुश्किल हो रही है. अगर इसको नहीं अभी किया ना तो बस तुम्हारी तो किसी बेटी की शादी, किसी बच्चे की शादी होगी ही नहीं. And that's the thing, right? Bottom line was marriage. Bottom line was शादी. Always. कि अच्छा आप पढ़ने नहीं जा सकते, आप ये चीजें करते क्योंकि इससे शादी नहीं होगी. Like that was the reason behind why you shouldn't be doing certain things. So interesting. The good thing in my life was actually my mother. So she's the one who actually forced me to apply for the Fulbright.
Okay. She forced me, and I think I've told this story before a few times, but my mother said, मेरी बहन बाहर थी, and I think my mother saw the transformative effect that it had for my sister as well, and she told me, listen, शादी तुम कर लोगी, हो जाएगी, but I don't want कि जो मेरी अपनी life में रह गई opportunities जो मैं नहीं कर सकी, तो I want you to be able to do those things. तो I want you to go. I don't want कि तुम शादी कर लो और तुम सोचो यार मैंने तो life में मैंने दुनिया ही नहीं देखी. So you also apply, you go on the Fulbright, you study and you come back and you can get married. That's fine. But like you have to do this. तो उस वक्त I was very happy and satisfied. मैं यूफोन में जॉब करी थी, अच्छी भली ज़िंदगी थी, सब कुछ ठीक था और मैं बहुत अटैच थी अपनी मदर से. तो मुझे था मैं क्यों जाऊँ, like my life is fine here. You've grown up in a city, दर्जी भी आपका यहीं है, दुकानदार भी आपको जानते हैं, तुम लोग भी F10 में रहते हो, like इस एरिया में. But basically आप जिधर रहते हो उधर हर कोई आपको जानता है. वो दुकानदार आपको पिछले 5-10 साल से, बहुत ही ज़्यादा ना, और भी छोटा था. They've seen you grown up, so it's a very regular kind of thing. So I'm like, why would I leave a place where everybody knows my name? People like I'm loved. I have people around me. I'm doing well. और आप वो छोटे से small pond वाले मेंढक होते हो ना? You think I'm like king of the world, man. I don't need any other. Everything's fine. My mom was like, अच्छा तुम बस apply कर लो. I won't force you to go. Just apply. She would drive me to the GRE classes. And she would pick me up from office, drive me to the class, and sit outside to force me to stay inside and study. Oh, nice. That's how she got me to give the GRE. And then एक step पे she was just like, अच्छा तुम ये step कर लो ना, इससे आगे मैं नहीं force करूँ, ये कर लो. And that's how I got the Fulbright. And I went, and I mean honestly it was transformative. It changed who I became and completely changed the paths that my life took. Yeah, because it's interesting, you said कि everybody knows your name और ये सारी चीज़ें. I think because I've recently been in that place where it's very easy to stay in your comfort zone and to feel like, okay, I've peaked here, I'm a queen here, I know this, and everybody knows me. मैंने एक thing बनाई अपने लिए and everything, and then we decided to like start from scratch somewhere else. But वही मुझे constantly अपने आप को ये remind कराना पड़ता है, because I have those dips of and those spells where I feel like why am I doing this when I have all of that there कि नहीं यार, this is in the long run, this is going to play a very important part in my story and I need to do this for myself. But it is very hard. It's so hard, Meenah. It is when you move for the first time and you don't understand anything, you don't know the system, आपको करेंसी भी नहीं पता, ठीक है, और आप ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे आप किंग ही होते हो, आप क्वीन ही होते हो, आपको सब कुछ पता होता है, दुनिया आपके आगे होती है, आपने फिगर आउट कर ली, life is figured out, right? And then you make that move and you're like, okay, now I'm bottom of the food chain again, I have to make my way up again, I have to build my credibility, my networks, my support systems, everything, so everything from scratch. So but you have to remember कि ये opportunity भी बहुत कम लोगों को मिलती है, right? Exactly. So ये in itself इतनी बड़ी privilege है for us to be able to take that step, to be able to explore, to be able to get to those opportunities. वो जो hard part है वो that's part of the game. That's part of the game. Yeah, like so many people don't even get to do that. Yeah, absolutely. Absolutely. So बड़ा उस वक्त tough था, but वो transformative होता है और उसके बाद you always come out better for it. Yeah. So growing up, what did you want to be? अच्छा मैंने बड़े होके क्या बनना है? That's a fun one. When I was younger, I used to say dulhan because I went to some weddings and मैं दुल्हन बनना है, बड़े होके तैयार होना है, मेकअप करना है और स्टेज पे बैठना है, बड़ा फिट काम है ये. But then also while growing up, I remember I always wanted the powerful parts. And it's so fascinating because I see the same for my daughter now. She, even when we're playing a game, she wants the part that has agency and she wants the part that has power. वो एक story है ना, 3 Little Pigs or Wolf वाली, I'll blow your house down. She wants us to play the game and she wants to be the wolf. Even though the wolf is a bad guy. She's completely comfortable because the wolf has the interesting part and the wolf has agency. So she's completely, it's so interesting, little girls who जिनकी अभी conditioning नहीं हुई, they're comfortable playing the evil role, but the role that has agency and power. That is very interesting. So मैं जब छोटी थी मैं कहती थी मैं assistant commissioner बनूंगी, मुझे पता ही नहीं था कि assistant commissioner के ऊपर DC भी होता है. मैं कहती थी पता नहीं किधर से मुझे पता चला और मैं कहती थी मैं assistant commissioner बनूंगी. And I would draw myself, right, like I would daydream and I would draw myself and I would imagine myself driving a car because I thought that gives you independence and agency. I would draw myself wearing 3-piece suits, जो suits नहीं होते
like Meenah, blazers that is and so interesting. pants. Haan. Because वो एक power, in my head that was a power dress. Right. I had never seen a woman in a suit. Yeah, but see, like मैं भी यही exactly बात करने लगी थी कि it's very hard. जो कहते हैं कि representation is important. So it's very hard, like especially as a child, to imagine yourself in a role that you've never seen somebody of your kind be in. Yeah. Right? So absolutely. like because you haven't seen that imagery, people and kids especially, they don't tend to dream or think that way. So it's very interesting that you were like that, that without that imagery you could still see yourself, like dream big and see yourself in those places and those positions and with that kind of power. So it's fascinating. और जितना आप इसको unpack करो ना, why did I not draw an assistant commissioner wearing shalwar kameez dupatta? Yeah, because we had never seen assistant commissioners, like that was not imaginable. So जिधर powerful female leaders नजर आते थे, वो तो टीवी था ना, वो तो इस तरह के maybe shows थे, और उनमें वो पहनते थे 3-piece suit, तो वो blazers पहनते थे, या men थे, men who were wearing blazers and trousers, right? So in your head, even though I was you're completely part of living in a street and an area जहाँ शलवार कमीज दुपट्टा was the thing we wore, it was just something that when you aspired and when you visualized it, it was just something completely different. तो I always, एक दफ़ा मैंने कहा था मैंने स्टेट बैंक का वो बनना है, गवर्नर बनना है स्टेट बैंक का. Oh my God, this is a very unique answer. क्योंकि मुझे पता चला कि उनका सिग्नेचर होता है हर नोट पे. मैं नोट को देख रही थी, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये स्टेट बैंक का जो गवर्नर होता है, जो हेड होता है, उसका सिग्नेचर होता है. सो आई थिंक इशरत समथिंग उनका नाम था, शायद उनका सिग्नेचर था. मैंने कहा ये फिट जॉब है यार, मेरा सिग्नेचर हर नोट पे होगा, हर किसी. सो इस किस्म की मेरी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वो थी. बट अगर आप उनको अनपैक करो तो देयर वाज ऑलवेज अ नीड फॉर एजेंसी, there was always a need for independence, there was always a need for control in some ways, you can say. But I think this was also because I saw women be very powerless around me. I saw women without any financial independence. मेरे इर्द कोई भी नहीं था जो financially independent होता. मेरे इर्द even financially independent women भी otherwise extremely dependent थी. औरतें उस ज़माने में जिस वक्त हम grow up कर रहे थे, बहुत ज़्यादा औरतें बहुत ज़्यादा मार खा रही थी. That was a story जो constant थी और completely accepted थी, right? Domestic violence बहुत हाई है, शायद अभी भी पाकिस्तान में बहुत हाई है. उस वक्त जब हम स्कूल में बातें करते थे तो पता चलता था कि हर किसी के घर में हो रहा है. और इस किस्म के इंसिडेंट्स लोग बच्चे आके स्कूल में बता रहे होते थे और आप सुन रहे होते थे, राइट? सो आप देखते थे कि एजेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, चॉइस नहीं है. हमसे जो बड़ी बाजियां थी उनकी ज़बरदस्ती शादियां भी हो रही थी. मतलब all of that stuff was happening around us in our community, in our society. And it felt normal at the time. It was completely normal. But if for me, I felt like it shouldn't be normal, right? From the get-go, I had very strong feelings about it. And so my thing was, okay, how do I make sure this doesn't happen to me? Interesting. And I actually started earning money very early. Okay. Wow. And again, my mother was playing a big role in this क्योंकि उन्होंने हमेशा encourage किया. और I think financial independence एक ऐसा सबक है जो कहते हैं ना, learned it at my mother's knee. वो उन्होंने घोट के हमें पिलाया कि और ज़िंदगी में कुछ भी करना हो कर लेना, financially independent होना लाजमी है. अच्छा. No matter what, like this is the one thing you have to make sure happens in your life. Okay. So my relationship with money is also very like interesting. It's because it was such an integral part of like, okay, I have to do this. For myself, for nobody to be able to push me, for me to be able to make choices, for me to have agency, for me to have independence, I need to do this. तो मैंने small businesses, छोटे मैंने मेहंदी लगाई 10 साल. I was a मेहंदी वाली. I had my business called Henna Art. I ran that for 10 years. हर किस्म की चीज़, हर टाइप का बिजनेस ट्राई किया. I was a photographer at one point. हर चीज़ की, articles लिखे, सब कुछ किया. But started earning money very, very early also. Okay, so what was your first job? So job तो
like official job तो यूफोन वाली थी. It was finance में थी when I graduated. But businesses, I think when I was 6-7 years old, you started doing something or the other. Yeah. I started making things and selling them. मैं bracelets बना के अपनी गली में बेल बजा के बेचती थी. So you were like a born entrepreneur in a way. I think everybody's a born entrepreneur. Okay. Society beats it out of you. Yes. मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत early हमें developed होती है. मगर क्योंकि लोग हमें encourage नहीं करते, हमारे इर्द गिर्द के लोग या तो बच्चों को पैसे दे देते हैं और उनको इनकरेज नहीं करते कि वो कमाएं, या वो कहते हैं ये इससे टाइम ज़ाया होगा, पढ़ाई पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ पे फोकस करो. तो हम बच्चों को इनकरेज ही नहीं करते कि वो एंटरप्रेन्योरियली सोचें. मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ बहुत Mirana is 3.5 years old. पिछले दिनों उसने मेरे सारे जूते निकाले, उनको एक लाइन में रखा और फिर मुझे और उमर को आवाज़ें दी और कहा मेरे से जूते खरीदो. हाँ, kids do that actually. Yes. Yeah, she has no idea 100 rupees कितने हैं. उसको करेंसी का अंदाज़ा नहीं है. उसको अब ये समझ आ गई है कि जब वो शॉप पे जाती है तो पैसे दे के उसको कोई चीज़ मिलती है, मगर उसको 100 वो नोट रंग के हिसाब से चूज़ करती है. मुझे रेड वाला अगर ऑफर दो तो वो 500 का नहीं लेगी, शायद वो 100 वाला ले ले क्योंकि उसको कलर फैसिनेट करता है. मगर उसने खुद से without anybody telling her शॉप सेटअप की और फिर कहा कि मेरे से और उसने लिए मेरे से 100 रुपये लिए मेरे ही जूते मुझे वापस करने के लिए. एंड देन मेरे एक जूते का पेयर उमर को बेचा 100 रुपये के लिए. और फिर थोड़ी देर बाद वो पैसे रख के भूल गई. बट दैट इज entrepreneurship. Right. So most kids, I think I would actually say almost all, have that seed, but हम उसको ना जर्मिनेट नहीं होने देते. हम कहते हैं आप ABC पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, पढ़ाई कर लें, फोकस कर लें, डिग्री कर लें, बट ये वाली चीज़ हम नहीं करने देते बच्चों को. Very interesting. Yeah, I think you're right. Like, and वही बात है, I think it also comes from because generally entrepreneurial mindset जो है, it's about like problem solving, and it's also about like dreaming or doing things that you feel like doing, like you know, making bracelets, you know, so वो and then going and selling them. तो वो जो चीज़ है कि वो at some level सब बच्चों के अंदर होती है. It's about how much encouragement they get around them or discouragement. क्योंकि उस पॉइंट पे आप बल्कि बड़े अरसे तक आप बगैर सपोर्ट के ये नहीं कर सकते. जब मैंने अपना DSLR लिया था तो मेरी मदर ने मुझे 30,000 रुपीज़ लोन दिया था. और उस वक्त उनके लिए भी 30,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा था बिल्कुल. एट दैट टाइम, राइट. सोचो DSLR 30,000 का मिल रहा था, आप कितने का है, तो उसी से अंदाज़ा लगा लें. 30K एट दैट टाइम वाज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. एंड आई स्टिल हैव लाइक माई नोटबुक्स. मैं स्क्रिबल बहुत करती थी. आई हैव ऑलवेज बीन अ यू नो नोट टेकर एंड लिस्ट मेकर. तो आई हैव अ नोटबुक जिसमें मैंने रीपेमेंट स्केड्यूल बनाया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और वो 30,000 डिवाइड करके और आगे अमाउंट्स लिखी हुई है कि ये मैंने वापस करनी है. एंड आई पेड हर द फुल अमाउंट बैक. मैंने साथ आर्टिकल राइटिंग करनी शुरू की. उस वक्त यू नो नया अपवर्क वगैरह आया था. कोई एक बाजी थी, उस्मा बाजी, वो काम लेके आगे देती होती थी. मैं आर्टिकल्स लिखती थी, वो मुझे पैसे देती थी, 1,000 रुपये, 1,500, है ना. There was a rite of passage, right? It was, yeah. सो उस्मा बाजी यू नो अल्लाह करे खुश हों जहाँ भी हो, पर उन्होंने बड़ा काम दिया मुझे. तो मैंने उससे पैसे कमाए और उससे आई पेड ऑफ माई मदर. बट अगर वो मुझे ना देती वो पैसे, उन्होंने एक रिस्क लिया, राइट. इट वॉज अ बेट दैट शी टुक बिकॉज इट वॉज हर मनी. शी हैड टू इन्वेस्ट इन मी एट दैट टाइम फॉर मी टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन माई ओन सेल्फ. सो यू नीड दोज पीपल अराउंड यू. एंड आई हैव बीन सो लकी एंड आई हैव बीन so privileged that I had people like that were able to invest in me and that were able to support my investment in myself. क्योंकि फिर वो कैमरा आया, फिर मैंने सीखा फोटोग्राफी कैसे करते हैं, फिर मैं फोटोग्राफर बन गई. मैंने जाके इवेंट कवरेज की, यू नो, इस किस्म की चीज़ें. तो वो अदरवाइज पॉसिबल ना होता. So and it's interesting, right? Your mom, she loaned you that money. Yeah. So and then you had to like give her that money back. So I'm thinking, you know, it's not just that she made an investment in you so that you could invest in yourself, and then obviously that led to a journey of photography and everything. But it's interesting that aspect where a sense of financial responsibility was given to you. We always had to give the money back. It was always a loan. That is wonderful, right? Like, so यही होता है ना कि a lot of what we do is, and how we tend to sort of treat our daughters and our women, is that we always give them the money and we don't expect them to feel any responsibility for it or how to take care of it, right? And what that has done in a way is that it has taken away a lot of empowerment from them when it comes to handling finances. So वो जो financial literacy है वो बहुत lacking है because you have never felt the responsibility of
the money, or you've never been given the money, and also given the money, or also you've been told constantly that you don't have a head for numbers. ये भी तो and then you believe that, and those absolutely we all tend to believe that कि money is something ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती, I can't get into it. You know, my business right now, because we're doing financial intelligence for businesses, right? So I go speak to business owners all the time, and 98% of the time when they're women, when I say हम ना तुम्हारा बिजनेस है, मैं तुम्हें मेट्रिक के बारे में बताती हूँ ताकि तुम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सको, सही है, तो तुम आगे से पूछो कि यार ये मुजम्मिल देखता है. हाँ, नंबर्स वाला पार्ट जो है ना, ये मुजम्मिल देखता है. बाकी सारा कुछ मैं, आई एम द क्रिएटिव पर्सन, आई एम द ऑपरेशंस पर्सन, मैं बाकी सारा कुछ स्ट्रैटेजी में हैंडल करी हूँ, ये मैं करी हूँ, वो मैं करी हूँ, वो मैं करी हूँ, पर नंबर्स जो है ना वो मुजम्मिल देखता है. सो तुम किसी दिन आओ जिस वक्त मुजम्मिल यहाँ हो, तुम उसको मेट्रिक के बारे में बताओ, एंड देन ही विल डिसाइड कि हमने ये यूज करना है. So funny, this is how the conversation will actually go. I was guessing. I was guessing, but I knew, right? Because 98% of the conversations I've had have gone exactly the same way. And that's me. Like, people and like you. me and other. You are empowered. You are educated. You have the world at your fingertips. Mashallah, right? तुम Google को किसी तरीके से सीख सकती हो. You have everything at your disposal. But even then, you would tell me, Meena, यार मेरे जो numbers हैं ना, happy chirp के मुझे नहीं पता ये मुजम्मिल देखेगा. Yeah. So, and this is, and I'm not saying this to shame you. I'm saying this to tell you I understand and I empathize, because this is actually generations of women being told कि नहीं हमें समझ आती. तो हमें ये यकीन हो गया है कि हमें ये नहीं समझ आती. तो अगर मुजम्मिल तुम्हें धोखा दे रहा हुआ और तुम्हारे सारे पैसे एक दिन लेके चला गया, तो तुम्हारी स्टोरी उन 98% women वाली स्टोरी होगी जिनके साथ ये होता है. And I know someone personally जिसके साथ ये हुआ है कि she did her own business and her husband managed the finances. Completely ruined. ये स्टोरी इतनी कॉमन है कि कोई हद नहीं, राइट? क्यों? एक्चुअली नॉट, अच्छा ये तो अलग है ना कि वो लेके चला गया. इवन ये स्टोरी जब एक खातून का बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो वो बिजनेस कोई किसी और का बिजनेस बन जाता है. दैट्स व्हेन द मैन स्टेप्स इन, द फादर, द हस्बैंड, द ब्रदर, द सन, एंड दे से कि ये आपको मैं ये चला के देता हूँ, एंड देन इट बिकम्स देयर बिजनेस ऑल ऑफ सडन, एंड स्लोली द वुमन गेट्स फेज्ड आउट. वो बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, वो फैमिली बिजनेस बन गया और किसी और ने उसको टेक ओवर कर लिया, राइट? उसकी CEO-शिप भी खत्म हो जाती है वहाँ से. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, एंड अगेन दिस इज बिकॉज हमें ये यकीन ही नहीं है और हमें ये सिखाया गया है कि ये हमें नहीं आता. Because we've been kept away from any kind of financial responsibility or financial handling. You know, like इसलिए मुझे होता है कि financially independent, that is why I was saying this thing to you पहले, क्या financial independence की बात कर लो और औरतों को बोलो कि they should be financially independent, but उसकी thought उनकी यहाँ तक रहती है कि अच्छा अपने पैसे खुद बनाने हैं, right? पैसे कमाना is not financial independence. See, पैसों की ownership is financial independence, right? Being able to control your money and where it goes and how it grows, that's financial independence. You can earn money and give it to someone else. Exactly. You will not be financially independent. Yes, so that's what I wanted to say. कि वो हम लोगों की thought वहाँ तक रुक गई कि अच्छा you started earning money, wow, you're financially independent. No, but it is not until you learn how to actually manage that money. You have to have complete control and independence. And you can have that with a partner. That's not a problem, right? Umar and I make a lot of financial decisions together, and we make some financial. I think that's how it should be as well. कि most important decisions should be taken together. It's a partnership. We take financial decisions separately as well. That's perfectly fine. We have our own investments. We have our own thing, and then we also co-invest. We also grow together. We are not afraid of each other's financial growth. We are not insecure about it. नहीं है. But I do know exactly मेरे पास कितने पैसे और कहाँ पड़े हैं और किधर grow करने हैं और कैसे करने हैं. You know what's going on with the money. I know what's going on. It's in my name. It's under my control. And that's what makes me financially independent. आज अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है, कोई बात होती है, I'm not dependent on anyone. I don't have to figure out what my next step is going to be and look at someone else कि वो मुझे अब बचाएंगे यहाँ से आके, right? That in my head. And again, it comes down to your relationship with money and how you've grown up with this as well, right? A lot of people grow up with money being given to them very casually. तो उनको उसी की आदत होती है. Men and women. हमें बचपन में भी पॉकेट मनी मिलती थी, लिमिटेड पॉकेट मनी, और अगर वो पॉकेट मनी खत्म हो गई है ना बाय द एंड ऑफ द वीक और हमने आइसक्रीम भी खानी है, तो हम अपनी मॉम से कर्जा लेंगे टू ईट दैट आइसक्रीम, और अगले वीक की पॉकेट मनी में से वो निकलेंगे, नेट होंगे पैसे. मतलब वो आइसक्रीम के पैसे भी, यहाँ ओरिएंट रेस्टोरेंट है ना, उधर से चिकन टिक्का. अच्छा. So weekend पे हमारा दिल चाह रहा है to splurge and like go and have Orient chicken tikka. We would pay for it ourselves. And it would be netted from the next week's
Yeah, and you know, at that age when you start giving that sense to your children, तो एक तो उनको value समझ आती है मनी की, दूसरा फिर हैंडलिंग भी समझ आती है कि अच्छा यार हर वक्त नहीं होते पैसे, राइट, और इतना आसान भी नहीं होता, और फिर आपको उसको मैनेज करना होता है, एंड दैट इज वेयर दैट सेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या उसको ग्रो करना होता है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ ज्यादा करूँ तो फिर मैंने उसको ग्रो करना है, एंड हाउ कैन आई डू दैट, फिर मैं जॉब्स करूँगी, फिर मैं फिगर आउट करूँगी, फिर मैं और चीज़ें करूँगी, और मैं I will upskill myself, I will figure out what are all the different ways that I can grow the money. Actually, even मतलब women तो क्या, even men, like my husband has grown up in a very different family. He was always given money. ये चीज़ चाहिए अबू दे देंगे पैसे, ये चीज़ चाहिए अम्मी दे देंगे, उनकी कभी पॉकेट मनी वाला सिस्टम नहीं था, तो उसको टाइम लगा to grow into financial independence, क्योंकि he was so used to money being given to him. It was harder for him actually to become almost like I would say adult in terms of financial management and financial, even though he's an accountant, he's an accountant, but उसको आदत थी. No, but this is a very valid point. It's about your relationship with money, जो बहुत बचपन में ना fundamentals में आपके build हो जाता है. Very interesting point. I think, so I think, and this is something that I think we just tend to ignore so much. I think at some point, I don't know, you put some story, and this is a really long time ago, about how I think you have a bank account for your daughter. Yeah, so can you establish on that, because she's very young, she's like 3.5 years old right now. हमने मिराना का बैंक अकाउंट खोला था जब वो 6 महीने की थी. हाँ, okay, what is the thought behind that? So the thought behind it was actually मेरी मदर ने हमारे बैंक अकाउंट्स खोले थे जब हम छोटे थे. ठीक है. इधर MCB में खोलते थे वो बच्चों के बैंक अकाउंट्स, और जैसे ही उनको पता चला she took us all and she opened our bank accounts. So when I was younger, मैंने एक ड्रामे में काम किया था PTV के, और उसकी मुझे पैसे मिले थे 13,000 रुपीज़, तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आए थे. और फिर मेरी मॉम ने उनसे गोल्ड का ब्रेसलेट खरीदा था, उस वक्त 13,000 का 2.5 तोले का ब्रेसलेट, जो कि अब यू कैन ओनली इमेजिन वो है. सो ये वाली चीज़ ना मैंने देखी हुई थी, मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई थी. तो व्हेन मिराना वाज बोर्न, व्हेन शी वाज 6 months old, हमने उसका सारा ID कार्ड वगैरह बनवाया, एंड देन वी वेंट टू द बैंक एंड वी ओपनड हर बैंक अकाउंट. सो व्हाट वी डू इज, एक तो उस वक्त ना उसकी बर्थ पे जितने उसको पैसे मिले ना, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गिव, लाइक बेबी को देखने आते हैं वो सलामी टाइप देते हैं, पैसे देते हैं, वी पुट ऑल हर मनी इन हर बैंक अकाउंट. एंड देन वी बीन इन्वेस्टिंग फ्रॉम दैट मनी. क्रिप्टो था, हमने क्रिप्टो किया, हमने थोड़ा सा गोल्ड लिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम उसके पैसों से भी इन्वेस्ट करते हैं, हम सिर्फ कैश नहीं रख रहे उसके पैसों को. बट ऑल्सो एवरी मंथ उमर एंड आई पुट अ सर्टन फिक्स्ड अमाउंट इनटू हर बैंक अकाउंट. ठीक है. और वो फिर ग्रो करता है, उसमें से कभी कभी हम चीज़ों की पेमेंट्स भी कर देते हैं कि यार ये मिराना अब तुम्हारे पैसों से आ रही है, ये वाली चीज़ अब ये नहीं हम ले रहे, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट फॉर द मोस्ट पार्ट वी इन्वेस्ट दैट मनी, एंड द आइडिया इज कि जैसे एज शी ग्रोज अप, she will have something of her own, and she will then be able to take it forward and grow it, because वो financial responsibility वाली बात भी आ जाती है, right? Because now okay, something's been built, now you have to figure out how to grow it, and it is your thing. और वो हमारे लिए भी थोड़ी financial responsibility वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि अब देखो she's 3 years old and every month we've been putting in money, so that means that money has also been growing क्योंकि हम invest कर रहे हैं. So एक forced saving for मिराना on our part है. गोरे करते हैं ये बहुत ज़्यादा, college funds, इस किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ ये नहीं किया जाता, हम बाद में परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें. सो दिस वाज जस्ट समथिंग दैट वी स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली एज. ईदियाँ भी उसी में जाती हैं, बर्थडे के पैसे भी उसी में जाते हैं, जो कुछ मिलता है वो उसी में जाता है. क्योंकि ज़्यादातर लोग कहीं होते हैं ना कि वो मिलते हैं वो बस खर्च हो जाते हैं कहीं. क्योंकि खर्च तो बहुत जल्दी होते हैं ना, हम ना एवरीथिंग सो एक्सपेंसिव नाउ, मतलब इन्फ्लेशन हमारी इट्स इनसेन, लाइक अब तो चीज़ें बहुत ही होती जा रही हैं. तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक हम पिछले दिनों हम किसी ट्रिप पे गए थे, हमने मिराना के पैसे उससे लिए थे. हमने कहा अब इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये तुम्हारा टिकट जो है ना तुम्हारे. कभी कभी मैं उसको ट्रिक करने की कोशिश करती हूँ, उसको कहती हूँ मिराना तो मुझे जूते खरीद दोगी, फिर वो कहती है यस, फिर मैं उमर को कहती हूँ देखो अब दिस मीन्स आई हैव अप्रूवल फ्रॉम हर टू यूज हर मनी. ही डजंट लेट मी, बट आई ट्राई. No, but that makes sense. Like it's interesting to think about finances for your children like that. Yeah, and as they grow, they're going to see that. How you're doing that and learn from it. I mean, I think she'll have to, because वही बात है, अब मेरा relationship with money is वो automatic होता है, आपके parents के relationships with money आप पे transfer होते हैं. तो we don't want her to grow in financial anxiety, but we do want her to grow in financial, with a mindset of financial independence and growth. तो वो वाली चीज़ देखते हैं क्या experiment होगा with kids. You don't know. Sometimes they're born with their, sometimes they're always born with their personality, and you also
also have to work with them. Yeah. But Meeru's also growing up in our office. वो हमारे साथ office भी जाती है. Yeah, तो वो she's surrounded by like talk of. I was pregnant and I was training women entrepreneurs across Pakistan in tier 2, tier 3 cities. पूरी pregnancy में travel कर रही थी. तो उसने मेरी पूरी business growth training, pricing, costing वाली trainings उसने बार-बार सुनी हुई है. तो मुझे उम्मीद है कि जो है ना वो उसको याद होंगी कोई ना कोई चीजें. Yeah, I think she's gonna absorb. She's obviously absorbing all of that. So कुछ ना कुछ तो है उसका impact. So you said कि you were working in UFON उनके finance department में, right? So then how did sort of working for a company, you know, like how did you get into the whole investing thing, business thing? Did you have your first business? When was that? How did all this happen? So my first business happened even before UFON. I started officially henna art when I was 14 years old. Henna art. I was doing mehndi, and by the end of the 10 years, I kept working on that business. So I 10 years? Yeah, until I was about 24 and I left for the US. And what was that? I was doing mehndi and like people would book me 6 महीने in advance. बाहर से US वगैरह से जो brides पाकिस्तान आ रही होती थी शादियाँ करने, बहुत मेहंदियाँ लगाई हैं मैंने. But I was earning money and it was, I really enjoyed doing it. And actually mera idea of also studying entrepreneurship was because I realized I didn't know anything about how to grow a business. And it was a skill that was very lacking, and I was not from a business family. My grandfather was an army guy, my father was a doctor. Nobody really was an entrepreneur. Yeah, my father is now an entrepreneur, but like मैं कोई business family entrepreneurship family से नहीं थी. So I felt like I needed to study that. My first job was in finance at UFON. Hated it. I used to hate accounting. So I was right there. And that's why I'm able to really empathize, right? Because I was also somebody who has always hated numbers. Finance accounting से मेरी जान जाती रही है. मेरे accounting के टीचर थोड़े से परेशान हैं कि मैंने accounting app कैसे बनाई है. Like it is not something that came naturally to me. मैंने बड़े घिस के जो है ना ये चीज़ें पढ़ी हैं. तो मुझे बहुत बुरी लगती थी और मुझे अपनी जॉब भी नहीं अच्छी लगती थी. And actually Fulbright might have actually been a way for me to run away from that क्योंकि मुझे इतनी मज़ा नहीं आ रहा था कि I was like चलो इससे तो बेहतर है ये कर लेते हैं. But entrepreneurship is where my heart is. I believe in it. Like it is, I have seen it transform people, their families, their communities, their societies. I believe it will transform our country. It can transform our country. Small and medium enterprises are the heart of the economy. ये वो छोटे businesses हैं जो necessity based होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं for the sake of upward mobility. वो अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, वो अपने से बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ change करना चाहते हैं. अगर आप एक business सिर्फ इसलिए भी कर रहे हो ना कि आप अपने घर में फ्रिज खरीद सको, तो वो upward mobility है ना आपके लिए. बिल्कुल. ये these people are doers, right? ये वो लोग हैं जो कुछ करने की उनमें कुछ जज्बा है और उनको हेल्प करना और उनको सपोर्ट करना is I think my life's mission. Like I've accepted that for the last 10 years. This is so when I came back from the US, I started working with Invest to Innovate, जो कि एक startup accelerator था. तो again startups बहुत मुश्किल होती हैं रन करना और emerging markets में जहाँ infrastructure नहीं है, ecosystem exist नहीं करता, पैसे हैं नहीं, बहुत मुश्किल से वो लोग बहुत struggle के साथ काम कर रहे थे. तो हम उनके साथ बहुत closely काम करते थे. मैंने 4 साल ये किया. मैंने businesses को train किया. मैंने about 700 businesses तो सिर्फ एक USAID program के लिए train किए across Pakistan even while I was pregnant. वो वाली so you were like mentoring those no, actually going and delivering trainings like 2 दिन की pricing ऐसे करते हैं, costing ऐसे करते हैं, teaching them exactly how to like run this thing. बिल्कुल customer persona ऐसे बनाएं, इस perspective से चीज़ों के बारे में सोचें, इस तरह अपने business को grow करें. मेरी एक 2-day training थी that I delivered to about 700 entrepreneurs across the country. So I was doing all of this and then I decided to move on from I to I and I joined the World Bank as a consultant. The World Bank, my boss Sarmad, lovely guy, he brought me on board. He said, listen, you can go and work for the Ubers of the world later. पहले आओ ना जरा ये वाला काम मुझे करके दो. उसको एक project मिला हुआ था, Women Entrepreneurs Financing Initiative. तो उसने कहा यार आओ और मुझे बताओ इसके साथ हम क्या करें. तो it was literally from zero कि मैं और सरमद बैठ के हमने ideate किया कि project होना कैसा, इसकी शक्ल क्या होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा इतने पैसे हमारे पास, इसमें क्या डिज़ाइन करें so that we're able to create real impact, right? और women entrepreneurs को financing access कैसे पहुंचाएं, उनको किस तरह. So zero से मैंने वो program design किया सरमद के साथ. फिर हमारी टीम में और लोग add हुए, team grow हुई, all of that. So went from all the way from design to implementation for V5. 4 साल मैंने उस project पे काम किया. At the same time मैं उस वक्त सोची थी अच्छा how do I move into investing because I've worked on the entrepreneur side. I really believe I know startups.
Yes, like अब मुझे समझ आ गई है. और as an investor, I would really be able to know who to invest in. Like I know that, right? But my imposter syndrome kept telling me, यार तुम्हें accounting तो आती नहीं है. तो इन्वेस्टिंग के लिए तो आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए. तो ना तुम्हारी अकाउंटिंग ठीक है. मैं बड़ा बुरा फील करती थी यार, मैं जनरलिस्ट हूँ, मतलब मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है. मैं क्या करूँ, मैं अब CFA कर लूँ, मैं ACCA करना शुरू, क्या करूँ मैं, सो दैट आई एम एबल टू बिल्ड माई सेल्फ इन टू दैट रोल. बट माई पार्टनर जवाद, जो फंड मैंने ज्वाइन किया उसमें जो पार्टनर थे, ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही स्टार्टेड लाइक एन इंटरव्यू प्रोसेस टाइप ऑफ थिंग ऑन कॉन्वर्सेशंस हो रही थी. पहले तो मुझे लगा ही इज आस्किंग मी फॉर एडवाइस कि जी मैं कैसे बिल्ड करूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ VCs would call me and ask me for advice because I knew the ecosystem, right? So they'd call me and they'd say अच्छा ये कैसे करें, वो कैसे करें, and I'd tell them everything. So I thought Jawad was also coming to me for advice. मैंने कहा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले. Then he's like अच्छा would you be open to a role? I said yeah, I'm interested. I thought he would offer me a job. I thought वो associate hire कर लेंगे मुझे, and even that was like yes, thank God. पता नहीं कैसे करूँगी because accounting और finance तो मुझे नहीं आती, पर चलो मैं सीख लूँगी. हाँ, at least उस ट्रेन पे मेरी उस पटरी पे मेरी ट्रेन चल जाएगी. बिल्कुल. And Jawad on our final call, he said, listen, अच्छा, I want to offer you partnership. And I started crying. I was like on the phone bawling because I was like, oh my God, like I could not have imagined this. And I told him, I said, listen, you've seen, and that's the thing, he saw something that maybe I wasn't able to see because of my imposter syndrome. And he said, I don't care about he said, accounting and finance तुम सीख लोगी. And literally हमारी जो पहली डील थी, he said, ये लो इनका financial model, ये देखो बनाओ, मुझे investment summary बना के दो. And I'm like trying to understand the financial model. And Jawad is a numbers guy. Okay. He is a numbers guy. वो एक एक चीज़ वो छोड़ता नहीं है, वो बहुत सख्त है, ठीक है. और मैं सोचूं अच्छा इसको मैं जवाब कैसे दूंगी. But I was able to do it. Like I was able to actually. I think Meenah, a lot of times you just need someone to believe in you. Yeah. Like this is not even like fluff. This is real. No, true. Yeah. And it really inspires you into learning those things. मैंने सीखा, मैंने वो नंबर जो मैं पहले मेरी आईज ग्लेज ओवर हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने वो चीज़ें, वो लैंग्वेज, वो आइडियोलॉजीज, वो मेथड्स, वो सब कुछ मैंने सीखा कि कैसे बनती है इन्वेस्टमेंट समरी, कैसे बनता है मेमो, कैसे बनती है ये चीज़, ये बात क्या करनी होती है, इस सवाल जवाब का मतलब क्या है. I didn't know any of it. What I did know was the ecosystem. I knew startups. Yeah. So I was able to play on my strengths and then build on those things that were weaknesses for me. Yeah. So that's how I got into investing. We did a total of 8 deals. जिनमें से 5 I was able to do with them. And it was awesome. We had such a good time. And I learned so much because when you're investing, आप जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, उसके मॉडल के बिल्कुल अंदर घुस जाते हो. आपको उसका सेक्टर पता होना चाहिए, आपको उसकी उस बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हो आप, राइट. सो वी वुड डाइव डीप इनटू एवरी सेक्टर एंड अगेन दैट ओपन्ड माय आईज टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो डिड दैट. साथ साथ वर्ल्ड बैंक चल रहा था, साथ साथ ट्रेनिंग्स चल रही, सब कुछ साथ साथ चल रहा था. एक टाइम पे 5 नौकरियां करी थी मैं. हर चीज़ साथ साथ बिल्ड हो रही थी. मज़ा भी आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं बता नहीं सकती मैंने कितना एंजॉय किया इस चीज़, सारी जर्नी को. और मैं बहुत लकी थी कि हमारा इकोसिस्टम अभी भी खैर बहुत नेसेंट है, बट एक फ्रंट रो सीट मुझे मिल गई. एंड आई गॉट टू वर्क ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टेबल, राइट. मैंने डेवलपमेंट सेक्टर के बड़े मतलब वर्ल्ड बैंक, USAID प्रोजेक्ट्स पे काम किया, UNDP, ILO के साथ मैंने गवर्नमेंट के लिए मैंने कोविड रिस्पॉन्स फॉर SMEs डिज़ाइन आउट किया. बहुत कुछ करने का मुझे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू ऑल ऑफ दिस. स्टार्टअप्स की साइड से भी काम किया और फिर फाइनली घूम के ना ये एक मसला जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फॉर बिजनेसेस, राइट. कॉन्स्टेंटली सॉ extremely smart business owners struggle with their finances. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आती और जो मुझे ऐसे लगता है हम बहुत गलत एंगल से करवाने की कोशिश करते रहे हैं. अच्छा. एंड आई एक्सप्लेन व्हाई. मैं पिछले दिनों आई वाज टॉकिंग टू नादिया, फेम्प्रो में होती हैं, और मैं उनसे डिस्कस करी थी बिकॉज वी बोथ कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग विद SMEs एंड स्टार्टअप्स. मैंने कहा लिसन, आई शोड हर मेट्रिक एंड शी लव्ड इट. आई सेड लिसन नादिया, बिकॉज वी गेट इट, राइट. हम किसी बिजनेस ओनर को बिठाते हैं, उसको फाइनेंस की ट्रेनिंग देते हैं, उससे कहते हैं यार तुम्हें ना ये ऐसे बनाते हैं बैलेंस शीट, ऐसे बनाते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट, ये इस तरह से तुम अपने कैश फ्लोज बनाओ, इस तरह तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये बनानी होती है हर महीने, ये तुम बनानी शुरू कर दो. अच्छा अब हम ना तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है.
तुम आई डोंट नो तुम रजिस्टर्ड हो कि नहीं, बट मे बी इफ यू हैड अ स्मॉल बिजनेस दैट वाज अनरजिस्टर्ड आल्सो, तुम्हारे ऊपर कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तुम रजिस्टर्ड भी हो तो भी कोई एज सच कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तुम्हारा कोई इन्वेस्टर नहीं है, तुम्हारा एज सच कोई पार्टनर नहीं है, तुम एक सोलो एंटरप्रेन्योर हो या 2 लोग हो जो बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के तुमने क्या करनी है? ठीक है, तुम्हें मैं कहूँ हमना मैं तुम्हें ये टेम्पलेट दे रही हूँ, तुम ये हर महीने भरना शुरू कर दो, तुमने ये भरना ज़रूर है, तो मरे खपे भर लो उसको हर महीने। मगर अगर तुम्हें उसको पढ़ना नहीं आता, तुम्हें उसके बेसिस पे कोई डिसीजंस नहीं लेने आते, उसको एनालाइज करना नहीं आता, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तब बनाओ ना जब तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट हो कि तुमने किसी को सबमिट करानी है हर महीने। तुम अलमारी में रखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हो, क्यों बना रही हो भाई ये? तो तुम दूसरे तीसरे महीने कहो कि मीना यार ये जो मैं 8 घंटे इस पे लगाती हूँ महीने के एंड पे, अगर ये मैं प्रमोशन पे लगा दूं, ये मैं एक्स्ट्रा इसमें काम कर लूं, मैं इसमें मार्केटिंग का काम कर लूं, तो मैं और पैसे कमा लूंगी। नहीं आती, राइट? लाइक I'd rather spend that time doing something that I feel like has more impact, and मेरी strengths वहाँ utilize हो रही है। And the impact piece is important, right? You would rather spend that time doing something that will help your business make more money. Yes. Right? Yes. Because your business survival is more dependent on you bringing in more sales right now than making a financial statement that you will never use and nobody will ever see. Because I don't know how to analyze it. उसको तुम क्या करोगी? बना के भी रख के क्या करोगी? वो तो तब होती है ना अगर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट तो गवर्नमेंट ने हर महीने मेरे से आके लेनी है या मेरे इन्वेस्टर ने मांगी है, तो मैं इसलिए कंप्लायंस की खातिर बना लूं। सो हमारा ये बिलीफ है कि फाइनेंशियल ट्रैकिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूरी है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। ठीक है। और वो स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए उस तरह से होने चाहिए कि जिसमें वो डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सके, ना कि मैं आपसे फालतू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाती रहूं। राइट, सो यू आर प्रोवाइडिंग दैट सॉल्यूशन टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स। सो आई टेल यू नाउ, लिसन हमना, यू ट्रैक योर नंबर्स इन दिस एंड इट इज सुपर सिंपल। इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा, ये कोई एक्सेल शीट नहीं है, कोई स्केरी टेम्पलेट नहीं है, ये एक बड़ी सिंपल ऐप है। इससे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तुमने इसमें बस जो तुम कमा रही हो वो डालना है, जो तुम लगा रही हो वो डालना है। कॉन्वर्सेशनल है, ठीक है? वो तुमसे पूछ रहे आज को पैसे कमाए? हाँ जी कमाए। कितने कस्टमर थे? इतने कस्टमर थे। लाइक कोई स्केरी चीज नहीं है उसके अंदर। ऑन द फ्लिप साइड तुम्हें रियल टाइम में तुम्हारे मेट्रिक्स मिलेंगे, तुम्हें वो एनालिसिस मिलेगा मुसलसल ऑन योर डैशबोर्ड रियल टाइम, जिससे तुम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकती हो। महीने का 15 तारीख है, तुम महीने की 30th पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हो अगर, तो उससे तुम्हें पिछले महीने क्या हुआ यू कांट गो बैक एंड चेंज इट। वर्सेस विद मेट्रिक, इफ टुडे इज द 15th, पीपल कैन ओपन इट अप राइट नाउ एंड सी ओके माय बिजनेस इज इन द रेड। अब 15 तारीख हो गई है, क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैंने कुछ ना किया तो मैं महीने के एंड तक प्रॉफिटेबल नहीं होंगी इस महीने। So the next 10 days or the next 15 days I need to run a promotion, I should give a discount, I should do XYZ so that this month I earn more money or I lose less money. Okay, so this app basically helps businesses, like it gives you a clear picture of what's happening with your money, and I think that's important because a lot of times we don't even realize that it's actually helping us make better business decisions. Yeah, absolutely. And eventually help them scale their business or make better decisions for their business, right? Yeah, absolutely. I mean छोटी छोटी चीज़ें, right? अभी हमारी जो लेटेस्ट रिलीज आई है ऐप की, जो अपडेट आया है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। उनमें एक चीज़ है कस्टमर रिपोर्ट। सो कस्टमर रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि आपके जो आप जब ऐप में ट्रांजैक्शन डालते हो कि यार ये मैंने पैसे कमाए हैं, तो आप उसमें कस्टमर का नाम डाल सकते हो। मैंने हमना को ये चीज़ बेची है इतने की। मंथ एंड पे या किसी भी टाइम मैं कस्टमर रिपोर्ट खोलूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा मेरे टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, किस कस्टमर ने मेरे से कितने की चीज़ खरीदी, हमना ने मेरे से कितनी दफ़ा चीज़ें खरीदी। सो डेटा भी आ रहा है बिल्कुल कस्टमर्स का आप, और अब देखो उसकी बेसिस पे दैट्स अ बिग थिंग। डूड आई टेल पीपल आप कस्टमर पर्सोना बनाए, राइट? वो कहते हैं कैसे बनाए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ अच्छा आप नेक्स्ट जो 10 कस्टमर आएंगे ना, उन जब वो आपसे चीज़ खरीदें आप चीज़ें लिखते जाएँ ताकि फिर आपको पता लगे कि अच्छा जो मेरे नेक्स्ट मतलब मेरे पिछले 10 कस्टमर्स जो थे वो कौन थे, वो लड़कियाँ थी कि वो लड़के थे, वो किस एज के थे, उनके बारे में कुछ डिटेल्स आप फ्लैश आउट कर सकें, उन्होंने क्या चीज़ खरीदी, क्या नहीं खरीदी, कितने की खरीदी। विद दिस आपको एक सिंगल रिपोर्ट में अपने टॉप यूजर्स, टॉप कस्टमर्स वो क्या खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, एक ग्लांस में पता लग रहा है। इसी तरह देयर इज अ प्रोडक्ट रिपोर्ट। अब इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर यू टू ट्रैक कि उन 10 में से पिछले महीने टॉप सेलिंग कौन सा था, उससे पिछले महीने, पिछले 6 महीने में टॉप सेलिंग कौन सा था, ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आप वो चीज़ मुसलसल कहीं पर लिख रहे हैं या कहीं नोट डाउन करें, राइट? विद मेट्रिक यू कैन ओपन अप द प्रोडक्ट रिपोर्ट एंड यू कैन सी विद वन ग्लांस आपका टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन सा है और आपका लीस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन सा है। तो जो लीस्ट परफॉर्मिंग है उसको शायद आप फेज आउट कर दें, या अगर आपने मार्केटिंग चलाई थी किसी एक चीज़
इसके ऊपर ऐड चलाया था वो अच्छा चला है, तो फिर शायद दूसरे पे भी चला के देखें कि अगर मैं उतने ही पैसे इस पे लगाऊं तो ये चलता है कि नहीं चलता, एंड देन डिसाइड करें मैंने कौन सी चीज़ की इन्वेंट्री रखनी है, किस चीज़ की नहीं. आपकी ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है इवन विद दीज बेसिक्स, राइट? So that's what I meant, like then you end up making more mindful decisions of what to do with your business. वरना आप बस चले जाओ, right? But आपको एक एनालिसिस साथ साथ मिलता जा रहा है that can help you decide, okay, I need to do this or I don't need to do this, or I need to like इसको खत्म कर देना है प्रोडक्ट को, या इस पे सेल लगानी है, या इसको all of these things. ये जो डिसीजन मेकिंग है ये अभी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हम हवाई कर रहे होते हैं. यार अभी सेल्स का सीजन चल रहा है, मैं सेल लगा देती हूँ. हो सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट का ये हाई सीजन हो, तुम्हें हाई सीजन में कभी सेल नहीं लगानी चाहिए. तुम सेल तब लगाओ जब तुम्हारे प्रोडक्ट का लो सीजन हो, नॉट जब एवरीबडी एल्स इज पुटिंग अप अ सेल, राइट? एंड यू माइट आल्सो नॉट रियलाइज कि सब लोग इस टाइम पे सेल लगा रहे हैं, बट क्या पता सेल इस वक्त लगाने से आपको नुकसान हो रहा हो. Exactly. You're losing money. You're leaving money on the table, right? For you, it is not feasible to be giving this % discount. Yeah. There's something in our app called Founders Report. अच्छा. हम ना मोस्ट स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैव नो आइडिया कि उन्होंने बिजनेस को कितने पैसे वापस करने या बिजनेस से उनके कितने पैसे वापस करने. अच्छा. होगा ये तुम पैसे कमा रही हो, तुम्हारा बिजनेस है, अब तुम्हारे वहां से कहीं से पैसे आए, किसी तुमने कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किसी की करके दी, तुम्हें उधर से पेमेंट आई, तुमने यहाँ से चीजें मंगवानी थी, तुमने वो पैसे इधर लगा दिए, यहाँ से रॉ मटेरियल आ गया, तुम्हारी चीज आई, पैसे तुम्हारे पास आए, अब तुमने कोई बिल देना है, तुमने इधर से पैसों से वो वाला बिल दे दिया. ये मुसलसल मिक्सिंग ऑफ मनी हो रही है, पर्सनल मनी एंड बिजनेस मनी, राइट? जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी अनक्लियर कि एक्चुअली बिजनेस पैसे कमा कितने रहा है, और हम पैसे निकाल रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो पैसे वापस भी डालने हैं, right. या बिजनेस में पैसे डाल रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस ने ये हमें पैसे वापस भी करने हैं. तो इन मेट्रिक देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फाउंडर्स रिपोर्ट, जिसमें कॉन्स्टेंटली एक रिपोर्ट में आप जब उसको ओपन करो नजर आ रहा है, अच्छा अगर तुम्हारा और मुजम्मिल का बिजनेस है तो जी हमना ने इस वक्त इतने पैसे वापस करने हैं, या मुजम्मिल को बिजनेस से इस वक्त इतने पैसे वापस करने हैं, so that you're actually able to grow your business very clearly with some kind of demarcation between your money and the business's money. And I think this is I don't know how or why you guys came up with this app, but I think it's solving a very essential problem for a lot of entrepreneurs right now, क्योंकि बिजनेस के बहुत सारे और जो हैं लाइक आपको प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, बिजनेस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, बट दिस इज समथिंग जो कि जहाँ पे आके ना सुई अटक जाती है, लोग फंस जाते हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और व्हाई एंड हाउ इज बिकॉज हमने ये मसला इनसाइड आउट देखा है पिछले 10 साल. यू सॉ दिस इज द प्रॉब्लम. यही गलतियाँ की, ये वो गलतियाँ जो मैंने भी की हुई हैं, अपने बिजनेस में भी की, और फिर जिन बिजनेसेस के साथ हम काम करते हैं उनको भी हमने मुसलसल देखा स्ट्रगलिंग विद देम with same issues, right? So you know what the big विजन फॉर मेट्रिक इज. अच्छा. सो मैं सबको ही बात कहती हूँ, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले अगर किसी छोटी सिटी में भावल नगर में कोई बिजनेस ओनर है जिसने इस्लामाबाद में कोई चीज़ बेचनी है, तो उसको वो चीज़ें उठा के इस्लामाबाद आना पड़ता था. ठीक है. और इस्लामाबाद में कोई शॉप लेनी पड़ती थी, उन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी. यहाँ पे कोई वेयर हाउस, कोई जगह जहाँ वो चीज़ें रखेगा, उसके बाद वो मार्केटिंग एजेंसी के पास जाएगा, कोई फ्लायर बनवाएगा, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करेगा, पैसे लगाएगा. एफर्ट और पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे, इतने ज़्यादा लगते थे कि बहुत सारे लोग कोई नई मार्केट एक्सेस कर ही नहीं सकते थे. अगर वो भावल नगर में है तो वो सिर्फ वहीं बेच सकते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंच ही नहीं सकते, राइट? What Facebook did was it democratized access to markets, right? Yes. आप भावल नगर में बैठ के शिकागो में बेच सकते हैं. Yes. और आपने एक फ्री शॉप खोलनी है ऑनलाइन और एक फ्री इंस्टाग्राम पेज बनाना है और आपने तस्वीरें डालनी शुरू करनी है, और फिर फेसबुक बताता है यार ये वाली तस्वीर, ये वाला कंटेंट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग बेटर. तो इस पे अगर ऐड चलाओगे तो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आएगा. और ये टारगेट ऑडियंस है तुम्हारे सिमिलर जो तुमसे सिमिलर जो प्रोडक्ट्स और पेजेस हैं, उनकी ये वाली टारगेट ऑडियंस है. तो तुम इनको दिखाओ अपनी ये वाली तस्वीर, इतने दिनों तक इतने पैसे लगाओ इसके ऊपर और तुम्हारी मार्केटिंग हो जाएगी और तुम्हें इतने व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे और उससे प्रॉबेबली इतनी सेल्स कन्वर्जन हो जाएगी. ठीक है. एक बहुत कम सोफिस्टिकेटेड एंटरप्रेन्योर भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकता है, क्योंकि फेसबुक ने उसको इतना सिंपल, इनेबल कर दिया, इतना अनस्केरी बना दिया. ठीक है. सो एक्सेस टू मार्केट्स और एक्सेस टू मार्केटिंग, फेसबुक हम जब सोशल बिजनेसेस सोचते हैं तो वी डोंट थिंक कि कंपनीज लाइक फेसबुक आर लाइक सोशल एंटरप्राइजेस, राइट? हम NGOs के बारे में सोचते हैं, बट इमेजिन द इम्पैक्ट दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन इमर्जिंग मार्केट. चेंज
दुनिया बदल दी, राइट? दुनिया ही बदल दी अब. That's what we want to do with metric. Okay. कि in terms of accounting, financial intelligence, financial growth, right? And actually being able to grow your company based on your numbers. वो इतना simple हो, वो इतना easy हो कि दुनिया के किसी भी कोने में छोटी से छोटी सिटी में कोई अगर आज एक बिजनेस शुरू करने का सोचे तो उसको डर ना लगे नंबर से, उसको अकाउंटिंग से घबराहट ना हो, वो ये ना सोचे कि मैं अकाउंटेंट रखूंगा और वो मुझे ये बताएगा और फिर मुझे ये करना पड़ेगा. जब वो अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएगा, फेसबुक पेज बनाएगा, अपनी दुकान सेटअप करेगा, तो साथ ही वो मेट्रिक डाउनलोड करेगा और मेट्रिक पे भी अपनी दुकान बना लेगा. That was my next question कि कि मेट्रिक कौन एक्सेस कर सकता है, और like is it like the simplest of people, the first time entrepreneurs, women who are afraid of finances, Absolutely. is it for them? It is made for them. अगर आप रेगुलर एप्स यूज कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखी हुई एप्स यूज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप यूज करते हैं और इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, तो आप मेट्रिक यूज कर सकते हैं. आप डे 0 पे अगर आज आप बिजनेस सोच रहे हैं और शुरू कर रहे हैं तो आप आज से शुरू कर सकते हैं. और अगर आपका बिजनेस 5 साल से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, 50 लोगों का बिजनेस है, तब भी आप आज मेट्रिक यूज़ कर सकते हैं. हम आपका सारा पास डेटा उस पर माइग्रेट करके देते हैं और आपको अपने नंबर्स और अपने सारे मेट्रिक्स क्लियरली नज़र आने शुरू हो जाते हैं. सो ये बनी ही उन लोगों के लिए है. अल्हम्दुलिल्लाह हमने we're being used in 174 countries right now. Oh my God. दुनिया में 195 है. अल्हम्दुलिल्लाह. And this is organic growth. हमने उन countries में मार्केटिंग नहीं की. Nearly 100,000 businesses are using us in 174 countries. हम पे बहुत करम है. Like हम, और ये बहुत हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अगर एक ऐसा मसला हम सॉल्व कर रहे हैं जो इतना बड़ा है और एक ऐसी चीज़ हमने बना ली है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ग्रो करें, हम इसको इम्प्रूव करें, हम इसको मुसलसल इतना वैल्यू क्रिएटिंग बनाते रहें कि लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता रहे. No, very interesting, and honestly I'm not surprised because somebody who has worked with so many young entrepreneurs and includes women and other kinds and helped so many businesses grow, done trainings and everything, has done investments, they would know what is the problem to solve. Also, right? somebody who made those same mistakes themselves. Somebody who hates accounting. किसी ने एक दफा पूछा, are you doing this because you love accounting? You must love accounting to be. I'm like, I actually hate accounting, and that's why I built this product. I want to make it so easy that nobody else has to struggle. Yeah, you know the struggle. That is why. मुझे तो अभी भी नहीं समझ आती. मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, मुझे तो नहीं समझ आएगी. नहीं, सही है. पर मुझे मेट्रिक दिखाओ, मुझे वो completely समझ आता है. I enjoy using it, right? So I understand why somebody should use it or would use it. No, and that's wonderful because you're empowering so many people who would otherwise, come at a stop suddenly because this part, they can't manage. So because अभी मैंने आपसे पूछा कि अभी मैंने बोला कि you helped so many people and everything, I want to talk about in terms of like women, and I think you've kind of answered that in a way, but I'd like to explore this more in depth with you. In all the trainings that you've done and the people that you've trained and the businesses you've explored, what problems have you identified when it comes to women trying to run businesses in Pakistan? अच्छा, so I mean numbers वाली तो एक साइड पे है और numbers के अंदर जो एक kind of एक और चीज़ connected maybe to the numbers thing is actually costing mistakes. अच्छा. Women tend to get pressurized a lot more easily in keeping low prices या lowering their prices या discounting. और हमें ऑलमोस्ट उससे डर लगता है, राइट? हमें स्टैंडिंग आवर ग्राउंड फॉर द वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट से थोड़ा सा डर लगता है. तो होता ही है कि एक तो पहले हमने कॉस्टिंग बहुत सही नहीं की होती क्योंकि हमें नंबर से डर लगता है. ऊपर से जब हमें लोग इस किस्म की एडवाइस देते हैं ना कि शुरू में कम प्राइस रखनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, पहले मार्केट में एंटर करने के लिए लो प्राइस रखनी चाहिए, तो हम उस चीज़ को, और क्योंकि इम्पोस्टर सिंड्रोम पहले ही होता है, आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव थोड़ा कम होता है क्योंकि हमें अपने आप पे बिलीव थोड़ा कम होता है. तो ये यकीन आना कि यार जो चीज़ मैंने बनाई है ये वाकई वैल्यूएबल है भाई, उसकी कोई वर्थ है, क्योंकि हमें सेल्फ वर्थ इतना हमारा कम होता है कि हम जो चीज़ जिस पे काम कर रहे होते हैं ना और जो हमारा प्रोडक्ट होता है हमें उसकी भी वर्थ कम ही लग रही होती है, राइट? इट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ आवर बैड रिलेशनशिप विद मनी, कि महंगी चीजें, बैगेज, ऑल ऑफ दैट बैगेज, तो हम अपनी सेल्फ वर्थ के साथ अपने प्रोडक्ट्स की भी सेल्फ वर्थ एसोसिएट कर लेते हैं और हम उसको लोअर रखते हैं. और हमने प्राइस कम करना बहुत आसान होता है, प्राइस बढ़ाना आपका कस्टमर आपको 100 जूते मारेगा, आपको 100 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार होगा. आपने उसकी देखिए, आपने
उस चीज़ की वैल्यू वहाँ पेग कर दी, राइट? मैं अगर आपको एक चीज़ बेचूँ और कहूँ यार ये 600 रुपये का दुपट्टा है, तो आप दिमाग में सोचेंगे अच्छा यार इसका मतलब है ये 300 रुपये का एक्चुअली है और ये 300 कमा रही होगी इस पर। तो आपने दिमाग में वो वैल्यू उसकी पेग कर ली एट 300 जस्ट बिकॉज मैंने उसकी प्राइस 600 रखी। मैं उसी दुपट्टे की अगर वैल्यू प्राइस आपको 1000 रुपये बताऊँ तो शायद आप उसकी वैल्यू को 500 पे पेग कर देंगी, राइट? हम वैल्यू को प्राइस देखकर पेग कर रहे होते हैं एज कस्टमर्स। तो एज एंटरप्रेन्योर्स जब हम एक चीज़ के ऊपर प्राइस लगा देते हैं या उसकी प्राइस मुसलसल डिक्रीज, एक दुकानदार जो बार बार आपको डिस्काउंट देता है, आपको पता होता है ये ओवरचार्ज करता है, इसका मतलब है एक कॉन्स्टेंटली डिस्काउंटिंग शॉपकीपर, यू नो देन कि हर दफ़ा डिस्काउंट मांगना है क्योंकि ये तो चीज़ों की प्राइस बहुत बढ़ा के लगाता है। तो हम उस शॉप पे हमेशा बार बार बार्गेन करते हैं, राइट? दिस इज अ बिग मिस्टेक दैट एंटरप्रेन्योर्स डू, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एक तो चीज़ की प्राइस बढ़ाना वैसे बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा आपने कस्टमर को आदत डाल दी, उसके दिमाग में वैल्यू पेग हो गई, आपने अपनी ब्रांड की वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज कर दी। Agreed. Which means then you're stuck. Yeah. On the flip side, अगर आप एक छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं होती. Most women do not have big amounts of money to invest in their businesses. Most women, right? In our country at least. उनकी families भी उनको पैसे नहीं देती. Most women also do not get जायदाद वगैरह, तो हमारे पास कोई lump sum आता नहीं है कभी जो हम इन्वेस्ट करें. तो एक तो आपके पास पहले ही एक्सेस टू कैपिटल नहीं है, आपके बिजनेस में इंजेक्शन कोई नहीं आ रहा पैसों का, आप उसको सस्टेन ही नहीं कर सकते फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनलेस द बिजनेस स्टार्ट्स टू मेक मनी, एंड ऊपर से आपने मार्जिन अपने बहुत स्क्वीज कर लिए हैं या आप मुसलसल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं. सो देन बिजनेसेस कांट सर्वाइव. सो वी हैव टू डिस्कनेक्ट these issues that we have with our self-worth from our product. We have to believe in the service and the product that we're offering. You have to understand your customer and what's going on in their head and what their persona is, and then try to sell the right product to them at the right price. And also remember कि हमारी अपनी capacity कितनी है. मैं केक्स बनाती हूँ और मैं दिन में 3 बना सकती हूँ मैक्सिमम. अगर मैं हर केक पे 200 रुपए कमा रही हूँ और मैं दिन में 3 बना सकती हूँ, तो मैं महीने में कितने ही पैसे बना लूंगी. इवन एट 100% कैपेसिटी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम गोइंग टू मेक. और कैपेसिटी इंक्रीज करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मुझे इंजेक्शन ऑफ कैपिटल चाहिए जो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा. सो दैट मीन्स मे बी आई शुड बी बिल्डिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस. मे बी आई शुड बी बिल्डिंग अ मोर प्रीमियम बिजनेस, चार्जिंग अ लिटिल बिट मोर फॉर दीज हैंड क्राफ्टेड, you know, low capacity business that I have. So these are just some mistakes that I think a lot of businesses make. So this is costing is also one of those things जो आपके again numbers or like मनी से अटैच्ड है. हाँ. और साइकोलॉजी से भी, राइट? अगेन क्योंकि आप अच्छा कंपेटिटिव प्राइसिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं. कॉस्टिंग तो चलें छोड़े ना, लोग देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई क्या चीज़ बेच रहा है. जी मैं ये ग्लास बना रही हूँ, मैंने देखा है ये ग्लास बाकी लोग 50 रुपए के बेच रहे हैं, मैं 30 रुपए के बेच देती हूँ. और मैं ये एज्यूम करती हूँ कि जो ये ग्लास खरीद रहा है वो इतना प्राइस सेंसिटिव है कि वो 20 रुपए की खातिर या 10 रुपए की खातिर या 5 रुपए जो मैं कम कर रही हूँ, कोई 50 की बेच रहा है, मैं 45 की बेच रही हूँ, वो 5 रुपए की खातिर मेरे से खरीदना शुरू कर देगा. ये assumption हमेशा करेक्ट नहीं होती. एक्चुअली बहुत दफा इनकरेक्ट होती है. अगर आपने कोई डिफरेंशिएशन नहीं लाई, आपने उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएशन नहीं की, तो हो सकता है वो 5 रुपए मुझे इतने मैटर ना करें एज अ कस्टमर कि मैं स्विच करूं. और मगर आपको एज अ सेलर वो जो आपने अपना मार्जिन स्क्वीज कर दिया है, अगर आपके पास कस्टमर आने भी लगे तो भी आपने अपना मार्जिन इतना स्क्वीज कर दिया कि आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो. तो प्राइस पे खेलने की जगह आपको हमेशा क्वालिटी पे और वैल्यू क्रिएशन पे खेलना चाहिए. कि मैं शायद इसी ग्लास को एक बेहतर पैकेजिंग के साथ, एक डिफरेंट कलर में, ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में चेंज करके इसको एक हायर वैल्यू प्रोडक्ट बनाकर बेचूं, तो लोग मुझे 50 रुपीज़ की जगह 75 रुपीज़ देने को तैयार हो जाए. और मैंने अपना मार्जिन बढ़ा लिया है, थोड़ी सी एफर्ट मैंने ज़्यादा लगाई है, थोड़ी सी कॉस्ट मेरी बढ़ी, मगर उससे इम्पैक्ट जो है मेरा ज़्यादा क्रिएट होगा. तो वैल्यू क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से सोचना, और दूसरा प्रोडक्ट की अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोडक्ट की वर्थ से डिस्कनेक्ट करके प्राइसिंग करना. हाँ, सही है, मेक सेंस. एंड व्हाट डू यू थिंक सम ऑफ द challenges that we have in our country when it comes to running small businesses? Oh my God, there are so many. Yes, can we talk about them?
there are just so many, right? And I mean, challenges come hand in hand with opportunities. The reason there are so many opportunities in our country is because there are so many challenges in our country. Yes, they are so interlinked. इस वक्त हम अपने मुल्क में कुछ भी शुरू कर सकते हैं. हमारे मुल्क में चीज़ों पे रेगुलेशन भी बहुत कम है ओवरऑल. मैं सिंगापुर गई थी रिसेंटली, मुझे पता लगा वहाँ लिटरली कुछ भी करने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट से एक लाइसेंस चाहिए. कुछ भी आपने बाल काटते हैं ना किसी के, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए. जैसे मैं दुबई गई तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर लाइसेंस होता है. You can't be, can't charge for your work if you don't have an influencer license. That's fascinating. I had no idea. Interesting. So see, in our country, that's not a requirement, right? So it's an unregulated market, which means कि यहाँ पे opportunity ज़्यादा है. आपको बहुत ज़्यादा barrier to entry आपका low है इस वजह से. हाँ, सही है. But on the flip side, challenges other kind के हैं. आपका infrastructure कोई नहीं है. चीज़ों के around professionalism बहुत कम है. अगर वहाँ पे influencer का license है, इसका मतलब है influencer marketing के around जो structures created हैं, वो भी बहुत professional होंगे. फिर आपको लोगों को पता होगा कैसे करना है. You know, यहाँ पे अभी भी आप एक्सप्लॉयटेशन भी होगी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों में. ज़ाहिर है चीज़ें चेंज भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती हैं. टैक्सेस के अराउंड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली चली जाती है. बेसिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी. हमारी पॉडकास्ट के बीच में भी गई थी. हाँ, सो आई मीन देखो, अब दिस इज योर जॉब, राइट? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. तो अगर बिजली वाकई तुम्हारे पास जनरेटर ना होता इस वक्त और बिजली चली जाती और मैं 1 घंटा दूर से आई हुई हूँ, तो तुम मुझे कन्विंस करती कि मैं किसी तरह 1 घंटा इधर ही तुम्हारे लिए वेट करूँ प्लीज, क्योंकि अगर आप वापस चली गई तो फिर आप वापस इस्लामाबाद कब आएंगी और फिर ये कैसे होगा? योर जॉब एंड योर बिजनेस इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय दिस. इवन दो तुम्हारा शायद बिजली से, मतलब तुम्हारी फैक्ट्री थोड़ी है जो बिजली पे सुपर डिपेंडेंट हो, एंड यू हैव वर्क अराउंड्स एंड वेज व्हाट यू कैन डू, राइट? बट जो बिजली पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो क्या करेगा? मतलब आज इंटरनेट बंद हो जाता है, मेरा तो काम खत्म हो गया. मीना, बिल्कुल राइट. Absolutely. So that's the thing, right? This instability but अपॉर्चुनिटी भी इसी वजह से है. जो हमारी अपसाइड है ना, जिसको हम अपसाइड कहते हैं, कि जो हम टाइम और मनी अभी लगा रहे हैं, इसका जो हमें पोटेंशियल रिटर्न मिल रहा है वो एक्सपोनेंशियली हायर है. क्योंकि यहाँ पे करना इतना मुश्किल है. देखो, ये काम करना इतना मुश्किल है. जो तुमने अभी तक अचीव कर लिया है, देयर इज गोइंग टू बी अ हैंडफुल ऑफ पीपल जो यहाँ तक भी पहुँच सकेंगे. बिल्कुल सही है, क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है. तो कंपटीशन भी, अगर पॉडकास्ट में देखें, पाकिस्तान में टोटल कितनी है जो एक सर्टेन लेवल तक पहुंची है? शायद नई बहुत सारी बन रही हो, बट बहुत कम होंगी, एक हैंडफुल होंगी जो एक सर्टेन लेवल तक पहुंची है. कंपटीशन लो है बिकॉज दिस इज सो हार्ड. कंपटीशन लो है. फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस हैं. बहुत सारी इस तरह की चीजें. अर्ली डेज में शुरू कर लिया आपने. पायनियर होना बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे अभी भी यू कैन बी द पायनियर इन ऑलमोस्ट एनीथिंग, बिकॉज राइट नाउ सारी गेम्स इस वक्त खुली हुई हैं. अभी तक किसी गेम में कोई विनर नहीं आया. किसी भी चीज में, किसी भी चीज को उठा के देख ले, तो कोई भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे नहीं पहुंचा. और कंपटीशन नहीं है ना. कंपटीशन नहीं है. सो आप कोई भी चीज करो वर्ल्ड क्लास लेवल पे, अगर आप करते हो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करते हो, तो यू विल ऑटोमेटिकली बी above and beyond the majority. आप टॉप 1% में आ सकते हो. राइट. वो पॉसिबिलिटी पाकिस्तान और अदर इमर्जिंग मार्केट्स में अभी मौजूद है. सो जो हमारे चैलेंजेस हैं, दैट्स द फ्लिप साइड ऑफ दोस चैलेंजेस. ज़ाहिर है वो चैलेंजेस बहुत बुरे हैं और बहुत पेनफुल हैं. और ऑनेस्टली मतलब अभी पिछले दिनों इंस्टेबिलिटी जो हुई, हमारे ऑफिस बंद हो गए. हम इन द मिडल ऑफ आवर फंड रेज, आप स्ट्रगल कर रहे हो, लोगों को भी जवाब दे हो, इन्वेस्टर्स को बता रहे हो नहीं इतने बुरे हालात नहीं है, सब कुछ ठीक है. और इधर भी काम कर रहे हो, लोग घरों में बैठे हैं. जो डिफरेंट लोग डिफरेंट सिटीज़ में वहाँ इंटरनेट बंद हो गए हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है. वो कोडर बैठा है, वो काम नहीं कर रहा, वो भेज नहीं रहा, रिलीज लेट हो रही है, कस्टमर pull back, and all of those things start to happen, and then you're constantly trying to figure out isko kaise solve kare. So it is not easy. I think like in Pakistan, when somebody does a business, they have very inconveniences, but they come as major challenges, because aapko like बहुत सारी छोटे छोटे लेवल्स पे इतनी डिफिकल्टीज हैं कि आपका एक स्मूथ डे ऑफ वर्क नहीं चल सकता. नहीं रोज कोई आग लगती है. रोज कहीं पे कोई बर्निंग फायर होती है, एंड यू लाइक आज ये बुझानी है, और मीना इसको फिगर आउट करना है. कि तो आपके बहुत सारे लाइक आपके ये टैंजिबल आपको चीजें नजर आ रही है ना. ऑनेस्टली आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना वो प्ले कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें. हाउ कैन यू फंक्शन एंड टू मेक रैशनल डिसीजंस इवन.
So I think उसका impact is greater than. मैं तो बहुत रोती होती हूँ. I don't know about you. मैं तो regular crier हूँ. मैं खुशी की चीज़ों पे भी रोती हूँ. मैं इमोशनल होके विजन और मिशन पे भी रोती हूँ और मैं प्रॉब्लम से भी रोती हूँ. तो उमर इज नॉट अ क्रायर. तो वो जो है वो हंसता है, मेरे रोने पे हंसता है, या मुझे कहता है क्या सोचा था, ये तो हमें पता था ऐसे होगा, क्या करी हो. पर मैं तो रो धो के अच्छा अपना कैथारसिस करती हूँ, सारा कुछ बाहर निकालती हूँ. अच्छा ओके नाउ वील फिगर आउट, नाउ वील स्ट्रेटजाइज, ऐसे कर लेते हैं. पहले रेगुलेट किया, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. नहीं, अच्छी बात है. आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट. But I think when almost 2 years ago Umar and I started taking some supplements, actually stress release, stress decrease के magnesium वगैरह इस किस्म के जो supplements होते हैं different, for the same reason, because इतना high stress environment में आप function कर रहे होते हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि जो है ना आप एक्चुअली सही करे हो नहीं करे, फिर कुछ गलत हो जाता है, लेकिन छप ठीक हो गया, अब नहीं हुआ. तो वो मैं कल we have friends who were over and they gave a talk at our office. तो वो कह रहा था, उसने हमारी टीम को कहा, साथ he's at We Over I and Bridgelinks, 2 companies में होता है. तो he said, listen, entrepreneurship is a cycle. There are ups and there's downs, and there's ups and there's downs, and you just have to be able to power through both. अप्स भी डाउन्स भी. ना अप्स पे बहुत खुश होना है, ना डाउन्स पे बहुत सैड होना है. आपने अपने आप को रेगुलेट करना है और फिगर आउट करना है, अच्छा ये अब अप है, कल हो सकता है डाउन हो, शायद शाम तक डाउन हो जाए. यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. या दैट्स ट्रू. हाँ, उफ, टफ एनवायरनमेंट. आजकल तो बहुत टफ है. दिस ईयर स्पेसिफिकली आई थिंक इज वन ऑफ द most I think challenging. it's extremely tough. And I don't know, मतलब मुझे नहीं पता next year भी क्या होगा, but जाहिर है instability और globally बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. तो we just have to power through. There is no other way. क्या करें और? Do you think कि in these times it's better to, like generally in these times, not just Pakistan के हालात, but generally in this day and age, it's like, and because of instability, it's better to focus on products that are global or digital or tech उस तरह से, because आपकी बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं वैसे ही. Do you think logistics और infrastructure पे reliance कम हो जाती है? Logistics पे reliance कम हो जाती है. Absolutely. I think हम बहुत lucky हैं, हमारे और business owner friends, startup owner friends जो कि logistics में हैं या इस किस्म की different चीज़ों में हैं, वो बहुत ज़्यादा impact होते हैं. Import पे ban लग जाता है, या duties बढ़ जाती हैं, या ट्रक रुक जाते हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं, शहर बंद हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं. हम क्योंकि ग्लोबली यूज़ हो रहे हैं और इंटरनेट बेस्ड हैं, टेक बेस्ड हैं, तो हमारी ऐप तो नहीं उतरती ना, वो तो यूज़ होती रहती है ऑफ कोर्स. बट ऑन द फ्लिप साइड ऑल्सो इमर्जिंग मार्केट से पैसे पहले निकलते हैं, राइट? जब ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो इमर्जिंग मार्केट में पहले, क्योंकि हायर रिस्क मनी पहले इन्वेस्ट होना रुकती है. तो इसका मतलब है कि टेक मनी भी आपकी ओवरऑल कम हुई है ऑलरेडी, जिसकी वजह से मे बी स्टार्टिंग न्यू थिंग्स राइट नाउ इज ऑल्सो चैलेंजिंग. तो यू हैव टू लाइक ऑलमोस्ट हैव अ बैलेंस. आई थिंक मोस्ट पीपल नाउ हु आर स्टार्टिंग न्यू थिंग्स आर फोकसिंग ऑन इंटरनेट बेस्ड businesses जिनमें logistics का पीस थोड़ा सा कम हो, या इवन सर्विसेज जो कि बाहर बिक सकें, राइट? आजकल आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. एनीबडी दैट हैज़ अ स्किल सेट दैट यू कैन सेल ऑनलाइन इंटरनेशनली एंड अर्न इन डॉलर्स और पाउंड्स इज डूइंग मच बेटर. Yeah, because you'd rather not earn in this currency at the moment. At the moment उसका कोई और कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इस तरह की अगर जो है, वो ज़ाहिर है इस वक्त सबसे ज़्यादा फिर in the short term at least सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगी. मतलब अभी जब आपका ये 9th में का सारा हुआ था and everything, riders could not get to deliver products, so जाहिर है उन businesses को impact तो हो रहा है ना, obviously. Like, so I mean it's so fascinating, right? Even for metric, अगर आप ये पिछले कुछ मंथ्स देखें जिनमें एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी हुई है, तो हमारा जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम उसको कहते हैं, जो कि बेसिकली हर कोई जो, जैसे अगर आपका बिजनेस यूज़ करे, आप जो ट्रांजैक्शंस डाल रही हैं, वो एक नंबर है जो कि पूरी दुनिया में जितने बिजनेसेस हमें यूज़ करें वो सब डाल रहे हैं. तो एक बड़ा सा नंबर है जो हमारा GTV है. सही है कि हमारी ऐप में इतनी ट्रांजैक्शंस डल रही हैं हर महीने या हर रोज़, राइट? एक नंबर है. हमें तो लोगों की ट्रांजैक्शंस नहीं नजर आती, बट वो एक बड़ा नंबर वी कैन सी, राइट? पूरी दुनिया का वो नंबर कम हो गया. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस बंद हो गया. सो अगर बिजनेस ही नहीं है, कोई कुछ बेच नहीं रहा, कोई कुछ खरीद नहीं रहा, कोई कुछ बेच सकता नहीं है, तो वो क्या ट्रांजैक्शन डालेगा? मेट्रिक के अंदर भी इवन वो पैसे हमारी जेब में नहीं जाने थे, वो एक सिर्फ एक नंबर है. बट पूरी दुनिया के लिए वो आपको पता है
ईद इकोनॉमी, somebody was telling me, I mean this is unsubstantiated, so मुझे नहीं पता ये नंबर उन्होंने कहाँ से लिया था, but somebody told me that the approximate reduction in Eid GDP is about 60%. कि हर साल ईद पे जितनी स्पेंडिंग होती है इस साल सिर्फ 40% हुई है of that amount. So imagine like the impact on businesses, that means businesses sold 60% less. मैंने यही सुना था अभी कि इस दफ़ा ईद पे लोगों ने कपड़े नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए, मतलब like it's just मैंने नहीं लिए. I had a suit that was lying पहले से, मैंने वो सिलवा के वो पहन लिया. I did not buy like a new thing, right? Because it was just मेरे पास कपड़ा पड़ा था, मैंने वो सिलवा लिया and then I wore it. It was still a new dress, but I didn't spend any, and I might not even do it for this Eid because it just isn't making sense right now. So if people who are as privileged as us, right, are making those decisions and those cuts, everybody I'm speaking to, मैं किसी सैलून जाती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा आपकी क्या कैसा चल रहा है, वो कहते हैं जी लोग बहुत कम हो गए, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. छोटी ईद पे आई वेंट टू द सैलून और वो ऑलमोस्ट खाली था, जबकि यूजुअली चांद रात पे सैलून्स में सांस लेने की जगह नहीं होती. तो उन्होंने कहा भाई मैसिव रिडक्शन. आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको बताएंगी जी 25 की जगह 16 रह गए कस्टमर्स. डेंटिस्ट के पास जाओ, पीपल आर नॉट गोइंग टू डेंटिस्ट राइट नाउ, कि वो कह रहे हैं यार किसी तरह गुजारा कर लेते हैं दांत के दर्द के साथ. बिल्कुल लोग बिल्कुल एसेंशियल्स पे आ गए हैं, और ऑब्वियसली देयर सम पीपल वो जो कि उनको भी मुश्किल से पकड़े हुए हैं कि अच्छा हम एसेंशियल्स पे भी कैसे स्पेंड करें. बिल्कुल. सो राइट नाउ इफ योर बिजनेस इज फोकस्ड ऑन एसेंशियल्स, इट इज प्रॉब्ली डूइंग ओके. बट इफ यू हैव अ बिजनेस दैट वाज फोकसिंग ऑन सेमी लग्जरीज फॉर द upper middle class, that is not doing well. But if it's like for the top, then it's going fine. If it's for like the extreme elite, the extreme elite are still okay. If it's something super luxurious and super premium for extreme elite, that's fine. But anybody below that, we're all sliding backwards. So basically upper middle और middle जो है उनका lifestyle थोड़ा ज़्यादा change होता है. वो नीचे चले जाएंगे ना, जो upper middle था वो middle हो जाएगा, जो middle था वो lower middle हो जाएगा, जो lower middle था वो और नीचे चला जाएगा. हम सारे के सारे नीचे की तरफ पुश होंगे. I don't categorize myself as the extreme elite, but जो extreme elite है जो कि बिल्कुल untouched रहती है generally, you know, factories and वो वाले जो वो खैर factory owners भी कह रहे हैं हम impact हो रहे हैं, but मतलब super big business and all of that, वो जो है ना they'll be fine. So at a time like this, that would mean that at a time like this, it would be okay to start a business that caters to the elite or the lower class, like essentials or the masses. Anything that the masses need, anything that is essential. People still spend on education, people spend on health, people spend on food, people spend on basic security, right? वो वाली चीज़ें आपकी जो requirements हैं वो नहीं change हो रही. पर जो चीज़ें you know extras थी, nice to have थी, जो कि हम luxuries enjoy कर रहे थे, right? Going to a salon and getting a massage is a luxury. I will not go now because it's too expensive for me. I can't afford it. It doesn't make sense. I get my waxing done, but I won't get the massage done this time. Maybe not even. Maybe I'll even waxing be when I'll come to shaving. You know, it's cheaper right now. I don't want to go. I'll just get to come start shaving because I'll save the waxing money and I'll do something else with it. And it's not even like अच्छा अब आपको save करना पड़ा है, but like for example पहले आप जब जाते थे तो like मतलब आपकी एक तो वो हो रहा है कि as in for example if you are a small business owner, so if you're a small business owner, your business is not doing well, right? So आपकी इनकम भी कम हो गई है, राइट? बिकॉज बिजनेस ओनर्स के लिए तो इट्स लाइक रियली अप एंड डाउन. आपकी इनकम भी कम हो गई है एंड देन व्हेन यू गो आउट टू गेट अ सर्विस और प्रोडक्ट उसकी प्राइस भी बढ़ गई है. सो इट्स लाइक अ डबल whammy, right? It's double whammy. So one thing business owners can do, I made a video about this the other day also, is the generalist versus specialist thing. Okay. In times like these, specialists or specialist business will still do well. Okay. Or somewhat better. क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बिजनेस के पास आप तब जाते हो जब आपको बहुत स्पेसिफिकली वो चीज़ चाहिए होती है. इवन इफ इट्स समथिंग लाइक फूड, आपने स्टेक खाना है, आपको क्रेविंग हो रही है, आइसक्रीम खानी है, क्रेविंग हो रही है, तो जो बेस्ट आइसक्रीम की जगह होगी, अगर आपने पैसे लगाने ही हैं तो आप उस स्पेशलिटी आइसक्रीम जगह पे जाके लगाओगे या स्पेशलिटी स्टेक जगह पे जाके लगाओगे. सही. वर्सेस आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ बहुत सारी नॉर्मल जगह जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें शायद मैं ना जाऊँ. सेम फॉर सैलॉन्स. अगर आपका बहुत जोर का दिल चाह रहा है कि आपने कोई हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप उस सैलॉन के पास जाओगे जो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फेमस है.
हाँ. मगर जो रेगुलर सैलून्स हैं जो मसाज और वैक्सिंग और इवन मैनिक्योर पेडिक्योर्स करें, शायद आप वो अवॉइड करना शुरू कर दो, पर वही पैसे जमा करके आप हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करा लोगे. तो आप बड़े पैसे लगाओगे स्पेशलाइजेशन पे, पर आप छोटे पैसे या रेगुलर अमाउंट्स ऑफ मनी एट जनरलिस्ट बिजनेसेस में लगाओगे. So basically you will, everything will be like an investment. So because this is a lot, even if it's a lot of money, because it's bringing a drastic change or improvement in my life, I'm going to spend money the on impact that. is higher. I'll do that. So जो चीजें स्पेशलाइज करिए ना किस चीज में, वो will continue to do okay, will do better than anything. So अभी कोई बिजनेस खोल रहे हैं, वो जनरलिस्ट ना खोलें. उसको किसी थीम पे लाएं, किसी स्पेसिफिक चीज में उसको कहें ये चीज हमारी जबरदस्त है. बेशक वो एक चीज बेच रहे हो, आप निहारी बेचें, निहारी बेचें, पर इस्लामाबाद की बेहतरीन निहारी है ये, तो जब निहारी खानी है ना तो वहीं जाना है. तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनको निहारी खानी होगी. मगर अगर आपने जनरल रेस्टोरेंट खोल दिया जिसमें निहारी भी ओके है, हलीम भी ओके है, फलानी चीज भी ओके है, वो इस वक्त नहीं चलेगा क्योंकि हम घर पे खाना खा रहे हैं. और क्योंकि लोग बहुत सोच के अब कर रहे हैं मनी स्पेंड, तो वो और आपकी मार्केटिंग पे भी कम पैसे लगेंगे क्योंकि आपको टॉप ऑफ माइंड बनना ईजियर हो जाता है जब आप स्पेशलिस्ट होते हैं. राइट. मैंने अगर अपनी सारी मार्केटिंग एक निहारी के अराउंड करनी है या एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड करनी है, तो वो सारे पैसे मैंने उस पर लगाने हैं और लोगों के दिमाग में हेयर ट्रांसफॉर्मेशन या निहारी के लिए टॉप ऑफ माइंड होना है. इट्स लाइक KFC, राइट? वो फ्राइड चिकन खाने के लिए वही है. अगर आप फ्राइड चिकन खाने आप कहीं और जाएंगे ही नहीं जाएंगे. बिल्कुल सही आपने कहा. हाँ. सो दैट मेक्स सेंस. दैट्स वेरी इंसाइटफुल. कभी सोचा नहीं मैंने. हाँ. आपकी ब्रांडिंग में हेल्प हो जाती है, आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स आपकी ईजियर हो जाती है. बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स एंड आजकल ऑब्वियसली रिसेशन और सारी चीज़ों के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है. सो आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु वर फाइनली गेटिंग रेडी टू लॉन्च देयर स्टफ, like get into it and launch अब now they're suddenly just like should we not, like people don't have that kind of guidance and that sort of help करें या ना करें. I'm just like, bro, I don't know. I talk to a lot of businesses. I do coaching on the side, so I get to talk to a lot of businesses and give exactly this. I do it. मैं कम कर लेती हूँ coaching hours बहुत, क्योंकि honestly और बहुत ज़्यादा काम हुआ है. But I open up coaching hours usually at the start of the month. मैं कुछ slots open up करती हूँ and then I like just usually just put on my Instagram कि अच्छा अगर किसी ने coaching hours लेने हैं तो they'll just book it. But I get to talk to a lot of businesses who are in the same place. तो वही should we, shouldn't we, या what type of business should we make, या इसकी कम्युनिकेशन, इसकी ब्रांडिंग हम बिल्ड कैसे करें और इसको कैसे ग्रो करें, इस टाइम पे ये करना भी चाहिए कि नहीं. I think these are big questions. These are big questions. And people don't, and people like मैं कहूँ कि especially I think women don't have enough people around them to help them. And also, and I say women, the reason that I say that is because generally like when women and girls sit together, their conversations are very different, right? And when boys and the men are sitting together, so they will be talking about these things, right? But that's what we've been taught, right? That's what we've been taught. Like हम इसी तरह बड़े हमने अपनी अम्मियों को भी यही बातें करते हुए सुना है, हम भी यही बातें करते हैं. And not saying there's anything wrong in the conversations that we have. I think they're very essential as well. But I'm just saying कि हमें बहुत कम daily life में मौके बहुत कम मिलते हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें. और ज़्यादातर एक्चुअली लोग जो हमारे इर्द होते हैं वो हमें डराते भी बहुत हैं. हाँ, बिल्कुल. हमें जनरली like women have told me this कि ना हमें my husband is not letting me register because he's saying कि कल को FBR वाले आएंगे तो उनसे कौन निपटेगा, फिर मुझे ना दफ्तरों के चक्कर लगवाती रहना, ये तुम कर लो तो फिर कल को किस चीज़ में फंस गई तो फिर क्या करेगा, तो फलानी चीज़ तुम कैसे मैनेज करोगी on your own. There are a lot of questions, a lot more questions that we have to answer. Women also get asked different questions, right? There was a very big study जहाँ पे even investors It was a big research जिसने कहा कि investors even women entrepreneurs से फ़र्क सवाल पूछते हैं versus men. Men get asked questions around growth. Women get asked questions around risks. ये रिस्क आ गया, ये आ गया चैलेंज, तो ये कैसे करोगी, तो ये इसको कैसे मिटिगेट करोगी, इसको कैसे सॉल्व करोगी. मैन गेट आस्क्ड अच्छा ग्रोथ कैसे होगी, कितना बड़ा हो सकता है ये, इसको किधर लेकर जाओगे, इसको कैसे ग्रो करोगे. वेरी वेरी इंसाइटफुल स्टडी. सो इवन व्हेन आई वाज एन इन्वेस्टर तब उस टाइम पर ये स्टडी मैंने पहली दफ़ा देखी थी. तो वी हैड टू बी वेरी माइंडफुल कि जब हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इवेल्यूएट करें तो वी हैड टू मेक श्योर कि हम अपने बायसेस एट द डोर छोड़ रहे हैं कि नहीं. बिकॉज हम जब विमेन को इवेल्यूएट करते हैं तो इवन तब हम भी ये सारी बातें दिमाग में हमारे
ये बायसेस है ना, बिल्ड हुए हैं. बिल्कुल. तो लोग जब हमें एडवाइस देते हैं तो भी वो इन्हीं बायसेस के अराउंड देते हैं कि ये तुम सॉल्व कैसे करोगी, अगर ये हो गया तो इसको कैसे मसले को हल करोगी, अगर ये हो गया तो इस इशू को कैसे सॉल्व करोगी. तो वो ग्रोथ एडवाइस कम होती है और वो रिस्क मिटिगेशन या रिस्क पे क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है, जिससे हमारे अपने डर भी कभी कभी इंक्रीज कर जाते हैं. लाइक वो खदशे जो हमारे अपने होते हैं दिल में वो भी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं. हाँ, और वही बात है कि अगर आप हर वक्त यही सोच रहे हो कि अगर ये हो गया तो फिर आप ये कैसे सोचोगे? हाउ विल यू ड्रीम बिग, राइट? If you're always stuck in a loop and cycle of fear, how do you think big? Women and people who are not privileged and people who are in smaller cities, we tend to not think big. You'll see this issue if you talk to entrepreneurs from a major city and you talk to entrepreneurs from a tier 2, tier 3 cities. वो जो आपको numbers की projections देते हैं ना, वो completely different होंगी for the same business. क्योंकि एक ने या even people, कोई ऐसा person जो privileged background से है versus somebody who has not had a privileged upbringing, the ability to think big is taken away from us. तो इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब हमने बिल्कुल इस कॉन्वर्सेशन के शुरू में बात की, जो आपने चीज़ देखी नहीं उसको आप इमेजिन कैसे करोगे? नहीं कर सकते. हाँ, आप शलवार कमीज दुपट्टे के साथ उस टाइम पर असिस्टेंट कमिश्नर इमेजिन ही नहीं कर सकते थे. तो अगर आप वो नंबर्स वो चीज़ें इमेजिन ही नहीं कर सकते तो आप उसको वर्बलाइज ही कैसे कर सकते हो? आप वो मांग भी नहीं सकते, वो आप डिमांड नहीं कर सकते, आप खुद नहीं बिलीव कर सकते. It's not gonna happen. You can't believe that it will actually happen. And it's all attached to like your experiences, what you've seen, and your self-worth. You know, मैं इस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकती, मैं यहीं तक पहुंच जाऊं तो बहुत बड़ी बात है. You know, ये वो वाली चीज़ है. And I think that difference between classes भी है और that difference between gender भी है, like you said. You know, me and my husband, we pretty much belong to the same kind of background, right? But अभी तक like अभी भी बहुत सारी चीज़ों में I've come a long way, I think, but अभी बहुत सारी चीज़ों में I'm just like ये तो नहीं हो सकता, and मुज़म्मिल will just say हो सकता है. Like, what is making you think कि ये चीज़ नहीं हो सकती? Like, can you give me any logical reasoning? I'm like, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कभी भी नहीं होगा. And he's gonna be like, of course होगा. You know, and there's a huge difference between never and of course. बिल्कुल, absolutely. Umar and I have the same thing as well. बहुत दफ़ा ऐसे होता है, बहुत चीज़ों में ऐसे होता है. मुझे बहुत चीज़ों में ये सोचना पड़ता है, would like I literally come up with like men who are entrepreneurs and CEOs, and I think this is मैं उमर को कहती हूँ, you know, what would Elon Musk do? And he's like, please, like do not Elon Musk is not the person you aspire to be. I'm like, no, I'm not saying I aspire to be him. Like, he's problematic, he has all of his own issues, but I'm just thinking like he wouldn't be sitting here worrying about this. वो कहता करते हैं तो करते रहे, like I have to do what I have to do, right? So like in a lot of things, like I have to think of men and almost like aspirational men and think अच्छा वो इस चीज़ पे, and also even remind myself अगर मुझे कोई advice दे रहा है या मुझे कोई बता रहा है, I know they wouldn't say that to a man CEO or a man who is a co-founder, or a man who is, I know they wouldn't. I know they're saying these things to me because I'm a woman. It's all the biases. वही जो आप कह रही थी कि we all have to remind yourself as well of your own biases. Like I am questioning myself because I've been told that these are the challenges that I have. You know, when I was becoming an investor and I was questioning myself about not knowing accounting and finance, और मैं कैसे बनूंगी, frankly, most of the people who are partners in VC funds even right now in Pakistan are not accounting background people. Do not have a CFA. Most of them are not from that background themselves. Why was I thinking that I needed that additional medal to be able to break in? When all of these other people, like उनका तो पाकिस्तान knowledge भी नहीं था. मैं तो उनमें से majority तो बाहर से वापस आए और उन्होंने शुरू की चीज़. What do they know? But they believed that they could do it. और मैं यहाँ पे बैठकर अपने आप को question कर रही थी, जबकि मेरा market knowledge उन सबसे ज़्यादा, मतलब I say this with complete respect, but उस time पे they were new people coming into this market and I had been working there for 4-5 years. And I had deeply worked with every मतलब मैंने सब कुछ किया हुआ था. तो मैं अपने आप को इतना क्यों question कर रही थी? And you know my husband keeps telling me this. He's like, हम ना कि तुम अब बस अपने आप को as this content creator, influencer या इस तरह चीज़ों में देखती हो, but जो तुम्हारे पास skills हैं, जो तुमने on ground जो चीज़ें, जो तुम्हारा analysis तुम कर चुकी हो, जो तुम कर चुकी हो, it's so much. You don't give yourself enough credit for what you know. Absolutely. What you know. And he says कि you know more than so many people
बट जस्ट बिकॉज यू नो आपके पास वो सर्टन टाइटल, सर्टन डिग्रीज, सर्टन कोर्सेज या वो नहीं है, तो यू कीप पुटिंग इट. Courses, titles don't matter at all now, right? At all. अब तो बहुत change हो गया. You've grown a business. You know how to handle your employees. You've handled stakeholders. You know how to build brands. You know how customer psychology works. You know how audience psychology works. There's so much that you've done and that you know, right? And that's stuff that you're able to. That's stuff that you should be able to market and you should be able to sell. But क्योंकि हम अपने आप को question, मैं अभी पिछले दिनों भी उमर को कहती यार मैं तो जनरलिस्ट हूँ, मेरा क्या बनेगा, दुनिया तो स्पेशलिस्ट की है. And मतलब again, why do I keep putting myself in that box over and over again? It's in my head. And then I have to remind myself, okay, no, like I actually know all of this. मुझे product knowledge इतनी ज़्यादा है. मैं अपने आप को product person क्यों नहीं कहती? मुझे पता है product कैसे बना रही हूँ, मेरा learning curve है, हम सब learn कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें मैंने कल बहुत सारी नई चीज़ें सीखी अपने friends से, वो लोग they're both product people. But why do I not own that piece of pieces of knowledge that I have? It's interesting because we know but we think we don't know, and there's tons of people out there who don't know and they act like they know. So there's another study, have you heard of the confidence gap? No, I don't. So basically you know, if you put out a job you know वो out there कि अच्छा मैंने लोगों को hire करना है and this is the kind of person that I need, and you list all the criteria basically. So उसमें एक स्टडी थी कि अगर ना जब लड़के वो देखते हैं ना जॉब ओपनिंग और वो देखते हैं कि अच्छा वो 40% भी दे मीट द क्राइटेरिया ना, तो दे विल अप्लाई फॉर इट. अच्छा, लड़की का होता है कि जब तक वो 80 या 90% तक भी नहीं आती ना, दे डोंट इवन अप्लाई फॉर इट बिकॉज इट्स अ कॉन्फिडेंस गैप. आई हैव डन दिस where they will feel like यार ये तो नहीं, ये तो this is I can't do this. Confidence gap. I have done this thing where early on in my career people would reach out to me for jobs and I would actually ask them if like, are you sure? Like literally I'm like इतने पैसे next level of imposter syndrome. Literally like shooting myself in the foot like, are you sure? ये तो बहुत सीनियर नहीं है, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो ये नहीं किया हुआ, मैंने तो ये नहीं किया हुआ, ये पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है. Are you literally? I have said those things to recruiters and HR people on the phone who've called me for job offers, right? And like I've made them second guess themselves कि उन्होंने मुझे कॉल क्यों की. और बाद में people are like तुम पागल हो, तुम क्या. बट ये imposter syndrome आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद you have to work on it and you have to get it out of your system because this has been, ये तो हमारे अंदर कूट के भरा हुआ है. मैं even like पहले जब मैं अपने ये content creation का जो business aspect है खुद manage करती थी ना, तो I would quote much lower for myself. And Muzammil was like, तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या वैल्यू, क्या वर्थ है. एंड देन ही इज लाइक लिसन आई एम लेट मी डू दिस फॉर अ बिट एंड आई विल मैनेज यू. और अब लाइक आई रियलाइज, और ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा समझ ली कि वी डू टेंड टू यू नो नॉट अंडरस्टैंड आवर वर्थ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड यू नो quoting that for myself, people are willing to pay. वो सिर्फ मेरे जहन में था कि अच्छा ये नहीं है, ये वैल्यू. जबकि मैं इम्पैक्ट भी देखती हूँ अपने काम का तब भी you know. और अब तो मैं इस पॉइंट पे मीना लाइक अगर मैं किसी से बात करी हूँ ना, लाइक आई नीड समवन सर्विस और वो औरत है और वो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बताती है ना, तो मुझे दिल में खुशी होती है. लाइक इट्स बिकम पर्सनल फॉर मी. आई एम लाइक शी नोस, गो फॉर इट गर्ल. और कोई कम पैसे बताता है तो बंदा उसे ये कहता है अच्छा ठीक है पर तुम ना बहुत कम बेच रही हो, मुझे लगता है आपको इसकी प्राइस बढ़ानी चाहिए. इवन दो इफ दैट मनी इज कमिंग आउट ऑफ माय पॉकेट, जस्ट दैट रियलाइजेशन कि यार इस बंदी की सेल्फ वर्थ हाई है, ये समझती है कि उसको इतना अपने वैल्यू के लिए चार्ज करना चाहिए, मुझे दिल में खुशी होती है. हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं ना इन मेट्रिक, तो बड़ी दफ़ा इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम चार्ज कर रहे होते हैं. तो एक्चुअली मेरी टीम में दिस यू नो किक एस यंग वुमेन, और वो उनको कह रही होती हैं आप बहुत कम पैसे नहीं ले रहे इसके लिए, आपको पता है बाकी लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं इसके लिए, लाइक यू आर चार्जिंग अ लिटिल टू लेस. लाइक आप अपने फॉलोअर्स देखें, आपके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, आप ये क्योंकि वाकई आपके दिल में वो होती है कि यार ये अपने आप को अंडरसेल कर रहे हैं. सो अब मुझे लाइक होता है कि हाँ लाइक आई एम सो हैप्पी टू नो दैट यू नो दीज वुमेन नो नाउ कि हाँ ये वर्थ है. और we need to come out of that imposter syndrome, that you know poor self worth and the confidence gap thing. It's like
yeah we need to be able, but again मतलब वही ना इतना वो generational है और अभी भी आप करने की कोशिश करो तो लोग इतना अच्छा मुझे मेरे बारे में तो कहते हैं ना लोग ओ मीना तो is thinking about money all the time like ये तो metric यही करते रहते हैं families हमारी. I hope all women start thinking about money. No, all they care about is like their startup. All they care about is and people think oh you might not be a very good mother in their eyes even. You're definitely not a good like daughter-in-law, son, sibling, wife. Whatever. If your partner is not supportive, because you get judged on all of these things too. They're like, oh, this is too much. This is too much. इतना नहीं करने की ज़रूरत, इतना भी नहीं करने की ज़रूरत. And then when you ask them, अच्छा आप फिर मेरे बिल देंगे? मैं नहीं करती. Would you pay my bills? But nobody is really willing ever. No. वो आई हुई है ना एक क्लिप के सब मुझे एडवाइस देते हैं पर पैसे कोई नहीं देता. हाँ वो राखी सावंत. I love Rakhi Sawant. She's so unapologetically who she is. I love her. तो she's like पैसे कोई नहीं देता, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं बस. तो वो वाकई आप कहते हो यार हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं पर हम किसी रीज़न की वजह से लगा रहे हैं, हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं राइट. और वो आसान तो नहीं है. we're not doing something that's easy. हम शायद कहीं पर जॉब कर लें सरकारी टाइप की तो वो इजी होगी, फिर उसमें चाय भी पियेंगे और कॉफ़ी पियेंगे और हम सुकून से करेंगे और सुकून से जाएंगे, सुकून से आएंगे. बट अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, वो ग्रोथ चाहिए, तो जिस तरह वो एक्सेलरेशन एक पीरियड होता है ना, वो रॉकेट का टेक ऑफ वो जोर लगता है और फिर आप तेज़ी से जाते हो, तो वो वाली चीज़, वो फ्रिक्शन आपने गुजारनी होती है. तो वो हमारा टाइम है. एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इट, हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो एम्बिशियस, हु विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप ये कैसी हमने जब मैट्रिक शुरू किया था, बिफोर वी रेज्ड आवर फर्स्ट राउंड, वी डिडंट हैव एनी स्पेस और एनीथिंग, और हमारी फैमिली में किसी ने हमें कोई पैसे नहीं दिए बिजनेस स्टार्ट करते हुए. किसी ने लाइक माय मदर इज द ओनली वन एक्चुअली, शी गिव अस आई थिंक 2 months rent or something. मतलब it was not a very high rent, but उन्होंने बहुत दिल से कहा कि ये मैं दूंगी, और बहुत she was the only person in all of our families, nobody else invested anything. When the three of us are co-founders, we started, तो हमारे एक फ्रेंड थे, उनका रियल स्टेट का ऑफिस था. तो मैंने उनको कहा कि हमें ना एक छोटी सी स्पेस चाहिए, तो मुझे कोई दुकान वगैरह दिखा दे, हमने 5-6 लोग बिठाने हैं काम करने के लिए. तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा ऑफिस है और बहुत बड़ा है, हम एक्चुअली सोच रहे थे इधर से मूव आउट हो जाएं, बट इफ़ यू पीपल वांट वी कैन सबलेट वन ऑफ द रूम्स टू यू. तो तुम शेयर कर लेंगे इंटरनेट वगैरह का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तुम लोग को स्पेस मिल जाएगी. तो वाज अ टाइनी रूम इन अ रियल स्टेट ऑफिस, और हमने उसको प्यारा प्यारा सा करने अपनी तरफ से कोशिश की, पिंडी से अंदरून जाके कुर्सियाँ शुर्सियाँ लेके अपनी तरफ से जितना हम उसको जैज़ अप कर सकते थे हमने किया, अपनी तनख्वाहों में से कर रहे थे. और वहाँ से हमने बिज़नेस शुरू किया. तो हमने जो फर्स्ट कंपनी मीटिंग की ना, जिसमें सारे लोगों को बुलाया, वो नीचे वाला फ्लोर पे एक म्यूज़िक का वो था, अकेडमी थी. उनसे हमने कहा हमने यहाँ पे कर लें, उन्होंने कहा जी कर लें. तो हमने वहाँ पे बैठ के ना, ज़मीन पे बैठे हुए थे, कुर्सियाँ भी नहीं थी, पिज़्ज़ा खिलाया अपनी पूरी टीम को. 5-6 लोग थे टोटल, 5 भी नहीं थे, 4 थे और समथिंग. एंड हमने उनको बताया हमारा विजन क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं. हमने अपनी वाई बताई, हमने अपना कॉज समझाया, हमने अपना ये बिग मिशन और विजन. हमने कहा हम एक ग्लोबल प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट था ही नहीं उस वक्त, हमने कहा ये ग्लोबल होगा, ये दुनिया भर में यूज़ होगा, हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, और मिलियंस इसको यूज़ करेंगे, हम पैसे भी रेज़ करेंगे, हम मिलियंस रेज़ करेंगे इंशाल्लाह, और हम बहुत ग्रो करेंगे और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. तो वो जो लोग बैठे हुए थे ना वहाँ, वो सोचोगे इनका दफ्तर तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ज़मीन पे बैठ के पिज़्ज़ा हमें खिला रहे हैं, मतलब लिटरली नथिंग, और बातें इनकी देखो कि क्या है. तो देयर विल ऑलवेज बी, मतलब दोज पीपल स्टक अराउंड एंड दे वर एबल टू देन सी द कंपनी ग्रो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन. वो खुद भी उनकी ग्रोथ हुई, एंड देयर स्टिल अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल विद अस, बट देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु से यार ये कैसे, ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, ये क्या, ये जो मियाँ बीवी है ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसे कर लेंगे, इधर बैठे हुए और ये बातें पता नहीं कहाँ की कर रहे हैं. बट अनलेस यू आर एबल टू aim for that, unless you yourself are able to convince honestly your own self first कि नहीं. मैं जब लोगों को कहती अच्छा आप कह रहे हैं ना आपने मेंटल हेल्थ का वो शुरू करना है, क्लिनिक शुरू करना है, आप कहे मैंने पूरे पाकिस्तान का टॉप मोस्ट मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म शुरू करना है. हमारी जगह जगह ब्रांचेस होंगी और दुबई में भी जाके जो है ना हमारा क्लिनिक खुलेगा और ये होगा और वो होगा. तो लोग हंसते हैं आगे से ना, खुद लाइक वो नर्वस लाफ सी होती है कि ये क्या बातें कर रही है ये. एंड आई एम लाइक नो, अंटिल यू एम फॉर दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस, दैट लेवल ऑफ क्वालिटी, दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट, दैट काइंड ऑफ एम्बिशन, तो तब अदरवाइज तो कभी भी नहीं होगा. सो आई थिंक स्पेशली फॉर वुमेन ना, ये है जहाँ तक भी आप सोच रहे हैं ना आज,
अपने आप को कहें अच्छा इसको अगर मैंने 10x इमेजिन करना है तो वो 10x क्या है, what does that 10x look like, and then convince yourself that that is possible. That is possible, and then you'll ultimately start taking those small steps to make things happen. Absolutely. But without belief you can't, or the confidence you can't. Is there anything else you would like to add here, anything you want to share, talk about that we missed? Kuch hai? No, I think I had a very good time. The only one thing that I think I've been recently talking a lot about is choosing the right partner, which is something we didn't hit on. I'd love to. Actually, I would love to talk about that. But that is something, because especially तुमने मुझे बताया कि it is mostly girls and women who are listening to you, right? शादी जब हम यंग थे, तब मैं जब यंग थी तब भी बहुत बड़ा था जी, शादी बस हो जाए तो बस ये है, और अभी भी उतना ही है, जो शादी नहीं हो रही तो बस सबसे बड़ा मसला है, और शादी हो जाए तो सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा. बट गलत पर्सन से शादी का किसी को कोई ख्याल नहीं होता एक्चुअली, और हम इतनी गलत बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, हम इतनी गलत अलाइनमेंट्स कर रहे होते हैं. द ओनली टाइम यू marry someone is if their values are aligned with you. जो भी आपकी values हैं, values गलत और सही नहीं होती. Conservative values भी बहुत अच्छी हैं, liberal values भी बहुत अच्छी हैं. किसी की कोई भी value है, वो value उसकी है, उसको वो उसके लिए ठीक है. आपने ये देखना है कि आपकी values के साथ कोई person match करता हो, और अगर आप चांद पे जाना चाह रहे हैं ना, तो वो चांद पे जाना चाहता हो, या वो completely comfortable हो कि आप चांद पे जाना, वो नहीं जाना चाहता. मैं स्पेस में नहीं जाना चाहती, उमर स्पेस में जाना चाहता है, पर मैं उमर को fully support करूंगी कि उसकी ड्रीम फुलफिल हो. That is the kind of commitment that you need. Otherwise, none of it is going to be easy or possible, honestly. I think the biggest career decision that we make is who we marry. And the worst career decision we make is also who we marry. So who we marry isn't just a social decision. It is or a familial decision. No, only. It is not a family decision or a social decision. It is a financial decision. It is a professional decision. It is a career decision. And your growth is going to be accelerated or hampered because of the person that you end up living your life with. That is so true. And this is I think one of my biggest learnings. मैं जब अपनी privilege के बारे में सोचती हूँ ना, तो I try to identify when did I become privileged. So one is when my mother took a stand to send me to a private school, and then she took a stand during my life for Fulbright. That is a big switch. But she's the one who is the start of my privilege. And then the person I ended up with, Umar, I think my privilege stems from the fact that he is my partner. And because of that, मेरी financial growth भी accelerate हुई, मेरी mother की वजह से possible हुई, उमर की वजह से accelerate हुई. और अगर ये दोनों मेरे points of privilege ना होते, life would look very different. Life would 100% have I been agree with different. you so much. So that is the only thing that I wanted to kind of talk about, because I think हम जब decisions ले रहे होते हैं शादी के, हम बहुत और चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं. 100% Even right. शक्ल, पैसा. Umar was a student when मैंने बहुत दफ़ा ये story सुनाई हुई है. He was still a student. He was earning 10,000 rupees when we got married, and for the next 2.5 years was accounting पढ़ रहा था. His family is okay, but we were spending our own money, living our lives. तो हमारी travel, हमारी सब कुछ हम खुद फंड कर रहे थे. तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, मल्टीपल नौकरियाँ करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा. But it was all worth it. Because where we've been able to come, and the trajectory that we've been able to take would only have been possible if we were together to do it. Because of that partnership. Even absolutely. when I think about myself and ourselves and everything that we've done, we've played such a major role in each other's every professional success. Absolutely. And I can't even imagine, to be honest, कि अगर उस तरह की partnership ना हो तो किस तरह होगा ये सब. बिल्कुल. I think the one thing I say to Umar the most is there is no one else I would ever have been able to do this with. And I think that's my appreciation for the role that he's played in my life. And he is as appreciative of the role that I play in my life. So it's not just glorifying him, because he's a man, and honestly our standards for men are so low. No, that's what I'm saying, right? For both. I know what the role I've played in his career progress. I've transformed Umar. I've transformed Umar, and he's transformed me in a lot of ways. So ये जो decision है ना, ये बहुत ज़रूरी है for men and for women.
Yeah. और आपने ये शक्ल, हसब नसब, बैकग्राउंड, पैसा, गाड़ी किसी और चीज़ की बेसिस पे नहीं लेना, सिवाय ये कि आपकी वैल्यूज़ अलाइंड हैं कि नहीं है, और जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं ये पर्सन या तो वहीं पहुँचना चाहता हो या ये कम्प्लीटली हैप्पी हो आपके वहाँ पहुँचने से. अदरवाइज नहीं करना. Yeah, thank you so much. That is very insightful. Thank you, Meenah, for coming. Thank you for having me. This was a lot of fun. Nice. It was so natural. It didn't feel like we were being recorded. It just felt like we were chatting. Yeah, so it was a lot of fun. Same. Like it was like a very natural connect. Yeah. I hope that you guys also enjoyed this conversation and learned so much from it. Personally, I did. Meenah, you answered so many of my questions, by the way. You don't know this, but there were so many questions and doubts and thoughts I'm just happy that were in my head. That have been going on for a while, and I've been saying, Allah Miyan, please मुझे इनका solution बता दे. And it's like, वसीला बनाते हैं अल्लाह ताला किसी को. I'm insanely proud of both you and Muzammil. I think I've been Muzammil ko to you know this. I've known him from when we were kids in the school bus. But I've known you two for a while now. I've known Muzammil and his family for a very long time. So I've seen your journey, and I'm just inordinately extremely proud of both of you and what you so continue much to achieve. And inshallah, again, don't limit yourself. Just don't worry about anything other than when you know you're doing the right thing and you're growing for the right reasons, and then you just focus on your growth. Yeah, thank you so much. If there is anything you would like to say, please leave comments below. I'd love to read them. Please let us know what you learned from here, what kind of value it added for you. Meenah is always available for coachings, anything you want to learn about businesses or how to manage your business finances. They have the Metric app as well. Now we know about it. Wherever you're stuck, she's available for that. And don't forget to like, don't forget to subscribe, and I'll see you again next time. Thank you, and Allah Hafiz.